The students, we are again back with learning CA Inter FM. In our previous 5 sessions, we covered chapter of investment decisions. We comprehensively covered chapter of dividend decisions. Today, we would be starting with new chapter called management of working capital. And this chapter will go on for next 4 sessions. Okay? So आने वाले 4 session, including today's session, is on management of working capital. Now, again, our process of learning will remain same. First, we will try to understand कि इस chapter का जो नाम है, working capital, what exactly it means. Second, the learning objectives of this chapter. So second part, we would see कि इस chapter से हमें क्या क्या सीखना है in the next 4 sessions. What all concepts we would be learning under this chapter and how we will apply those in our practical life. Okay? And third, we will solve practical problems given in your module to the extent possible. So let me just share my screen with you all. Okay. So let's start with understanding the basic meaning of working capital. Bolo, what do you understand? Which WhatsApp link? I don't know. Tech team, if you know, you can just share with them. Okay. So tech team will arrange the requisite for you. Okay. Okay. Now, what have you understood? See, आपने working capital in your lower classes, you have heard this term frequently. I guess थोड़ा concept भी cover हुआ है lower class में. So, what have you understood by the term working capital? Anyone wants to try? What does working capital mean? Yeah, Spurti Rani, you gave the formula. That is, working capital is current assets less current liabilities. Correct. Formula is correct. But I want to know the meaning first. Formula will come on the secondary part. Part of capital that circulates on day-to-day basis. Yes, Gayatri, you are correct. Other students, capital which is required. Yes, correct. Used in production and day-to. Yes, so most of you have answered it correctly. Capital that remains after paying current liability. Okay, just current liability. So most of you are correct. It is the fund, it is the capital to run your day-to-day business operations. Okay? So it is that capital required to run your day-to-day business operations. Now let's understand the significance, the importance of working capital through a short story. You just visualize the story, enjoy the story, and just keep responding on the chat box. Let's assume one of the students today is having birthday. ठीक है? So एक student का आज birthday है. He invited all of us in his hometown for a birthday party. So हम उधर ही है. Let's assume हम उसके hometown में ही है. So he invited all of us for his birthday in his hometown and in a very recently good restaurant. मतलब उसके hometown में शायद कोई नई अच्छी सी restaurant open हुई होगी. So उसने वहां हमें invite किया for the dinner party. ठीक है? So since it was a dinner party and party free में मिलने वाली थी, we all reached perfectly on time. So जैसे ही when we were entering the restaurant, we were completely awestruck. हम shock हो गए. Looking at the ambience, मतलब ambience, interior, furniture, everything was mind blowing, superb.
एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, कंप्लीटली आउटस्टैंडिंग, ठीक है। सो हमें लगा इसने आज पार्टी जो भी रेस्टोरेंट में देने वाला है, दैट पर्सन इज like filthy rich party, because looking at interiors, looking at the ambience, looking at the artistic works, looking at the furniture, everything was top class, everything was aesthetic in today's language, ठीक है। सो वी ऑल सेटल डाउन इन दैट रेस्टोरेंट, हम रेस्टोरेंट में सेटल हो गए। द सर्विस पर्सन सर्व्ड वाटर, we drank the water. Now we were just discussing on the order कि हमें क्या ऑर्डर करना है, क्या खाना है, ठीक है। सो सिंस इट वाज अ पार्टी, we would obviously order the most costliest dish, yes or no, and the person giving party is also filthy rich, उसको उतना पैसे से फर्क भी नहीं पड़ता। तो हमने सोचा कि आज सबसे महंगी डिश ही ऑर्डर करते हैं। सो वी ऑर्डर सम एग्जॉटिक शाही पनीर, something like that, ठीक है। And looking at the cost of that dish, it was around, let's say, 5,000 rupees for one handi. Handi, you understand, right? One bowl, ठीक है, और one quantity. It was costing 5,000 rupees, ठीक है। So like this we ordered, बहुत सारे लोग थे, so we ordered 8 to 9 handis, 8 to 9 bowls, and the costing was coming around 40 to 45,000. So now जैसे we placed the order to the waiter, waiter said कि सर आपका ऑर्डर का टोटल कॉस्ट अराउंड 40 से 45,000 हो रहा है, सो फर्स्ट सर यू नीड टू मेक द पेमेंट। तो पहले सर आप पेमेंट करिए, फिर वी विल बी एबल टू सर्व यू दिस डिश, ठीक है। ओके, सो ऑब्वियसली फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, काउंटर क्वेश्चन होगा, ये ऐसी तो जनरली डाइनिंग रेस्टोरेंट ऐसी कोई भी नहीं है जो पहले पैसे मांगे फिर दे सर्व द डिश, ठीक है। सो वी आस्क्ड कि ऐसा क्यों, नॉर्मली सब जगह जो भी जहां भी हम डाइनिंग पे के लिए जाते हैं, फर्स्ट वी ईट टू आवर सेटिस्फेक्शन एंड देन वी गिव द मनी, ठीक है, देन वी पे द चेक, क्लियर। सो जैसे ही हमने ये सवाल किया वेटर को कि ऐसा क्यों, ही सेड सर आप जो पैसे दोगे ना, वंस यू पे द बिल अमाउंट ऑफ लेट से 45,000, तो ये 45,000 लेके आई विल book an auto rickshaw, I will go to the market, I will buy the ingredients that is needed to prepare your dish. मसाला हो गया, स्पाइसेस हो गया, वेजीज हो गया, पनीर हो गया। So all the raw ingredients, all the veggies, all the spices, all the masalas that is needed for preparing your dish, I will buy that from the market. फिर सर मैं वही रिक्शा में वापस बैठ के रेस्टोरेंट आऊंगा सारा सामान लेके, फिर ये सामान लेके आई विल गिव टू शेफ, बट शेफ इज नॉट एक्सेप्टिंग। शेफ इज सेइंग पहले मेरी इसमें से 10,000 की फीस दो टू प्रिपेयर द मील, सो आई विल पे हिज फीस of 10,000, just a random number of 10,000, and then he will start preparing the meal, ठीक है। once he prepares the meal, उसने किचन में रख दिया, but sir again I will not serve because even I am here for job, I am here on job, so even I will take some amount as my paycheck, as my salary, तो सर उसमें से 2,000 मेरी सैलरी बनेगी, वो मैं काटूंगा, फिर I will serve you the dish. Hey, did you visualize the example? Everyone, did you understand what's wrong with this restaurant? See, restaurant, you have visualized correctly, तो restaurant had money for ambience. अच्छा सा ambience बना दिया, अच्छा सा फर्नीचर, मीन सिटिंग्स वगैरह सब टेबल वगैरह एकदम फर्स्ट क्लास बना दिया। अच्छा, इवन द आर्टिस्टिक वर्क, all the interior work was aesthetic. So they had money. पीछे क्यों नहीं हो रहा है? हाँ. If you had visualized the example correctly, they had money for all the interior, ambience, artistic work, furniture, etc. In our normal accounting language, can I say they had money for investment in fixed assets? करेक्ट। सो फिक्स्ड असेट में तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा था, सभी बढ़िया था,
बट कैन आई से टू रन देयर डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस, रेस्टोरेंट का जो डेली बिजनेस क्या है? टू प्रिपेयर द मील एंड सर्व टू द कस्टमर्स। उसके लिए पैसे नहीं थे, आर यू फॉलोइंग? पहले मांगने पड़ रहे थे। सो दैट फंड which you need for running smooth business, for day to day business operation, that is working capital. Understood? So can I say सिर्फ fixed asset लगा देने से और just by investing in the fixed assets will your daily business start running? In our example, सिर्फ फर्नीचर, एम्बियंस, इंटीरियर, आर्टिस्टिक वर्क ये सब अच्छा कर दिया तो क्या रेस्टोरेंट दौड़ने लगेगी? No, na. So for smooth running of fixed asset, for their smooth running, can I say we need additional capital? And that additional capital needed for smooth running of fixed asset is working capital. Are you following? So without working capital, your business cannot run its day-to-day business operation. That is the significance of working capital. Even fixed assets will not run. 10 करोड़ का भी रेस्टोरेंट बना दो, एम्बियंस बना दो, एस्थेटिसिटी ला दो, 10 करोड़ से कुछ नहीं होगा भाई. यू हैव टू स्टार्ट योर डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस. आपको रेस्टोरेंट के लिए जो वेजीज, रॉ मटेरियल, सामान जो भी चाहिए वो लाके रखना पड़ेगा, उसका स्टॉक. शेफ्स को पहले से ही पेमेंट करना पड़ेगा और यू हैव टू जस्टिफाई देम कि वंस यू प्रिपेयर द मील वी विल गिव यू द फीस, और यू हैव टू हायर देम ऑन मंथली बेसिस. सो ये सब करना पड़ेगा. ठीक है, हर बार आप कस्टमर से पहले पैसे नहीं मांग सकते. अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? अनदर वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल. लेट्स से यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. ठीक है, सो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना है उतना इजी नहीं होता. फर्स्ट यू नीड टू सी द लैंड, यू नीड टू बाय द लैंड. On that land, on that factory land, you have to set up the entire big factory. तो फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन करवाना पड़ेगा. फिर उस फैक्ट्री में मशीन्स लाके फिट करने पड़ेंगे. मशीन्स का इंटरनल कनेक्शंस करना पड़ेगा, बिकॉज वन प्रोसेस will move to another process, to third process and then to FG. So internal electrical fittings वगैरह सब मशीन्स के बीच करना पड़ेगा. फिर टू ऑपरेट द फैक्ट्री एफिशिएंटली यू नीड एन ऑफिस स्पेस एज वेल, जो ऑफिस से आप पूरा फैक्ट्री मैनेज कर सको. तो फैक्ट्री में आपको ऑफिस भी एक सेटअप करना पड़ेगा. सो मान लो अगेन, जस्ट बाय सेटिंग अप अ फैक्ट्री बिल्डिंग, जस्ट बाय फिटिंग द मशीनरीज, जस्ट बाय इंस्टॉलिंग द इलेक्ट्रिकल connections, just by constructing the office within the premises, will your manufacturing business start? 50 करोड़ का फैक्ट्री बना दिया आपने सर, 50 करोड़ डाले तो बिजनेस तो स्टार्ट होगा ही ना सर. अभी एक एनआई से मशीन में डालने के लिए यू नीड रॉ मटेरियल्स, तो यू वुड नीड स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, दैट इज वर्किंग कैपिटल. अच्छा, मशीन में काम करने के लिए यू वुड नीड सम लेबर लाने पड़ेंगे, दैट इज वर्किंग कैपिटल. अच्छा, कुछ और ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स लगेंगे, दैट इज वर्किंग कैपिटल. अंडरस्टूड? सो फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ फिक्स्ड असेट you need additional capital, that is working capital. Understood? So working capital का दूसरा definition क्या हो गया? It is an additional capital needed for smooth running of fixed assets, as fixed assets cannot run on its own. Clear everyone? So this is another meaning, another definition of working capital. Clear? So मतलब crystal clear हो गया with example. Now let's understand इस chapter में हमें सीखना क्या है. So someone had rightly said कि sir working capital, I will denote working capital in short term as WC. ठीक है,
It is nothing but current assets over current liabilities. ठीक है. So in other words, can I say working capital में you will see some components of current assets and you will see some components of current liabilities. Components of current liabilities को हम माइनस कर देंगे from the components of current asset and you will get working capital. ठीक है. The amount that you need for running day to day business operation. Okay. So can I say current asset के what are the general components that you will see in most of the business? Yes. अरुण सागर correctly said. ये तीन तो generally रहेंगे. Debtors, cash, stock. ठीक है. And general current liabilities that you would see in most of the business. Bills receivable I will consider with debtors only. Receivables में ही दो आ गए, debtors और bills receivable. And current liabilities में yes, rightly said creditors. This you would see in 90% of the business is balance sheet. ठीक है. हाँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो या ना हो that is not guaranteed, but creditors तो generally in most of the businesses you will find this. Short term loan is not a common line item. हाँ, short term loan is a component of current liabilities, that is correct, but it is not a common line item that you will see in businesses. Creditors, yes, you will see in majority of the businesses. Clear? So in short, can I say to understand the management of working capital in broader sense, पहले हमें डेटर्स को कैसे मैनेज करते हैं that also we need to learn. Yes or no? How to manage the cash, that also we need to learn in this chapter. Management of inventory will again become equally important. Only then we can say that we are able to manage current assets. Are you following? So learning receivables management, learning cash management, learning inventory management, and learning payables management. This is the sub components of this chapter. Are you following? Sub part of this chapter. See, the heading is in broader sense, management of working capital. But working capital management में ultimately क्या करना है? To manage the receivables in such a way that it results highest benefit, maximum benefit to the company, okay? And in turn to the shareholders. So again, under management of working capital, we will learn how to manage cash efficiently. ज्यादा कैश बिजनेस में होना भी हानिकारक है और एकदम कम कैश होना भी बिजनेस के लिए नुकसानकारक है. So how to efficiently manage the cash? What is the optimum cash balance that company should keep? That we will learn under cash management. Clear? How to manage inventory efficiently? What is the best order quantity? What is the minimum order quantity? What is should be the maximum order quantity? That all we will learn under inventory management. ठीक है? And for creditors, we will learn payables management. Understood everyone? Are you understanding the flow of this chapter? इस chapter में हमें और भी क्या सीखना है? ठीक है? Management of working capital is a broader sense. It is in broader sense. But उसमें you have to manage the receivables. How to manage that we will learn. You have to manage cash. How to manage that we will learn. Inventory management we will not learn in FM because it is already covered in costing paper. ठीक है, CMA में कवर हुआ है. Material costing, that is all about inventory management. What is the optimum order quantity? So you have learned EOQ, economic order quantity, 2AO upon C, the whole under root. ठीक है, so that all stuff is already covered in costing paper. So FM के मॉड्यूल में भी they have clearly written you have to just refer to costing paper for inventory management. ठीक है, so वो यहाँ से निकल गया. Clear? So in short, in our next 4 sessions, we would be learning about receivables management. We would be learning about cash and treasury management. We would be learning about payables management. Clear, everyone? So the learning objective of this chapter is learning about receivables management,
that generates maximum, that creates maximum benefit to the company. क्या डेटर्स को 10 दिन का क्रेडिट देना चाहिए, 20 दिन का देना चाहिए, 40 दिन का देना चाहिए, 50 दिन का देना चाहिए, विच इज द बेस्ट क्रेडिट पीरियड फ्रॉम कंपनीज डायट परस्पेक्टिव. कंपनी के डायट में 40 दिन क्रेडिट देने पे सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, तो वी विल गिव 40 days क्रेडिट टू आवर कस्टमर्स. अच्छा, 30 दिन क्रेडिट देने में सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, we will give 30 days credit to the customer. So understood. So we will evaluate different credit periods to customers and select the best diet. Clear? Select the best one. That we will learn in receivables management. फिर there is cash and treasury management. Under this section of working capital, we will understand what should be the optimum cash balance that company should keep. See, I told you, ज्यादा कैश रखना means you are losing on investment opportunity. एकदम कम कैश रखना means you will not be able to pay your daily expenses as well. So what is the best fit cash balance? Best diet from cash balance perspective, cash bank balance perspective, that we will learn under cash management. ठीक है? And there is also a concept called preparing cash budget, कि फ्यूचर में कंपनी को कितने कैश की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है. सो दैट कैश बजट वी विल प्रिपेयर अंडर दिस सेक्शन ऑफ कैश मैनेजमेंट. Then we will learn about payables management, how to manage the payables effectively. So under this chapter we would be under this not chapter but subsection we would be learning कि क्या क्रेडिटर से हमें डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट लेना चाहिए कि नहीं. सी, क्रेडिटर विल गिव अस सम लॉलीज, विल गिव अस सम लॉलीपॉप्स. ही विल से सर मैं आपको क्रेडिट 45 दिन का देता हूं, ठीक है, बट अगर आप 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे ना तो आई विल गिव यू 2 to 3% कैश डिस्काउंट. दिस इज व्हाट लॉलीज इज ट्राइंग टू गिव अस. सो क्या हमें वो लॉलीपॉप एक्सेप्ट करनी चाहिए या 45 दिन में पेमेंट करना चाहिए? दैट वी विल लर्न अंडर पेबल मैनेजमेंट. ठीक है, व्हाट इज द बेस्ट फिट फॉर द कंपनी अगेन इन दैट केस? लॉलीपॉप एक्सेप्ट करना और जल्दी पेमेंट करना या फिर 45 डेज का पूरा क्रेडिट एंजॉय करके पेमेंट करना? दैट ऑल इवेल्युएशन वी विल डू अंडर पेबल्स मैनेजमेंट. बट ये सारा मैनेजमेंट कब कर सकते? सी, दिस आर द कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल. दिस ऑल आर द लाइन आइटम्स ऑफ वर्किंग कैपिटल. बट ये सब लाइन आइटम्स को समझने के लिए पहले वी हैव टू लर्न हाउ टू एस्टिमेट द वर्किंग कैपिटल. ये सर नो, पहले ये तो सीखो वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कैसे होगा. वंस यू लर्न हाउ टू कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल, फिर उसके स्पेसिफिक लाइन आइटम्स के बारे में सीखो. ठीक है, फिर उसके कंपोनेंट्स के बारे में सीखो. अंडरस्टूड? So this is another learning objective. Estimate the amount of working capital needed. This additional capital, ये जो additional capital हमें चाहिए ना for smooth running of business, ये कितना होना चाहिए? 5 लाख होना चाहिए, 10 लाख होना चाहिए, 15 लाख होना चाहिए? What should be the amount of working capital? That we will estimate, that we will learn in this chapter. ठीक है? And again there is next concept is something called as working capital operating cycle. Working capital operating cycle. This concept we will learn in this chapter. वो क्या होता है? When we take this concept at that time we will learn. ठीक है, बट फिलहाल के लिए आप ये समझो कि there is some concept called working capital operating cycle जो हमें सीखना है इस चैप्टर में. सेकेंड, वंस यू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, मान लो आपने एस्टिमेट कर लिया कि सर हमें 15 लाख वर्किंग कैपिटल चाहिए बिजनेस के लिए, तो नेक्स्ट स्टेप वुड बी नाउ अरेंज द फाइनेंस फॉर दिस 15 lakhs. Yes or no? Second step becomes arrangement of finance. ठीक है, so last part would be financing of working capital. Clear? सो पहले वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट कर लिया 15 lakhs. अब ये 15 lakh आप इसको अरेंज कौन से सोर्सेज से करोगे? दैट ऑल्सो वी नीड टू लर्न. क्या लॉन्ग टर्म सोर्सेज से करना चाहिए, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से करना चाहिए? दैट ऑल थिंग वी विल लर्न इन दिस चैप्टर. ठीक है, सो फॉर नाउ, फॉर द नेक्स्ट 2 sessions
we would be covering these topics 4, 5, 6 because पहला टास्क is to learn वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कैसे होता है, फिर उसके सब कंपोनेंट्स में डिटेल में जाओ. ठीक है. So first initially we would be covering 4, 5, 6 and then step by step we would take one by one subsections: receivables management, then cash management, then payables management. Again, I'm repeating: stock management, inventory management, we will not learn under FM. It is already covered in costing paper. Okay. Okay. So now I hope you understood the learning objective of this chapter as well. कि इस चैप्टर का अल्टीमेट मकसद गोल क्या है. तो ये सारी चीजें जो 6 पॉइंट्स लिखे थे, 6 चीजें, 6 कॉन्सेप्ट सिखाने का मकसद. ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट पार्ट, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल. ठीक है. WC इज नथिंग बट योर वर्किंग कैपिटल. ओके. एज वी नो, working capital ideally is nothing but current assets over current liabilities. ठीक है. How to calculate working capital? Current assets over current liabilities. Can I say current asset में, as you rightly said, the general line items that you will see in most of the businesses is debtors, cash bank balance, stock, and sometimes even short-term investments, prepaid expense. So I will group this as under other current assets. ठीक है. इसमें prepaid आ गया, short-term investment वगैरह आ गया. First of all, you know ना what is current assets? Those assets which has a life of maximum 1 year. ठीक है. जिनका आयुष्य, जो असेट का आयुष्य 1 साल या उसके अंदर है, उसको करंट असेट बोलते हैं. ठीक है. This I hope you have already learned at lower level. अब current liabilities में means can I say all the short term liabilities, those liabilities जिसका आयुष्य is 1 year और उससे कम. So I guess you will see creditors over here. Sometimes you will also see some outstanding expense. Yes or no? Provision for expenses, bank OD वगैरह. Short term loans, again we have to pay this loan within 1 year. So these all are the components of current liabilities. Okay. So now can I say अगर हमने सीख लिया how to find the value of these line items, how to find the value of debtors, how to find the value of cash bank, how to find the value of stock, how to find the value of prepaid expense, or I would say how to find the value of short-term investment. Can I say your job to calculate current asset is done? Yes or no? Likewise, if you learn how to find the value of line items of current liabilities, your job to find current liability is done. Okay? Once current asset is found, current liability is found, we just deduct current liability from current asset and we get working capital. So in short, मोटा मोटी लेमैन पर्सपेक्टिव से समझे तो वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू जस्ट डिडक्ट करंट लायबिलिटीज फ्रॉम करंट असेट्स. ठीक है. द रिजल्टेंट फिगर वुड बी वर्किंग कैपिटल. बट करंट असेट्स के लिए उसके लाइन आइटम्स जो कंपोनेंट्स है उसकी वैल्यू तो ढूंढनी पड़ेगी. दैट वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर. Hey, now my question to you. What is the heading of this topic? Can I say it is estimation of working capital? Tell me, estimation past का होता है कि future का होता है? Future. Yes, correct. Everyone is correct. We estimate the future. Past का it is already done. It is actual. It is not estimate. It is actual. ठीक है? Okay. Now next question. Is future certain की uncertain? फ्यूचर में क्या क्या होने वाले उसकी सर्टेनिटी आज हमें पता होगी? अनसर्टन. यस, अनसर्टन. करेक्ट. एवरीवन इज करेक्ट. इट इज अनसर्टन. फ्यूचर में 1 साल बाद क्या होगा दैट वी डोंट नो.
Acha, next second, what will happen to us? That is also very uncertain these days. Correct? So future is uncertain. So whenever there is uncertainty in financial management, FM supports it with assumptions. To remove that uncertainty, we take help of certain assumptions. Okay? So assumptions leke we remove that certainty and uncertainty, and we try to bring to certainty. Okay? So whenever in FM there is uncertainty about future, we take help of certain assumptions. So कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर के भी कुछ assumptions है. ठीक है. Assumption number 1, unless otherwise specified, unless otherwise specified, all activities in the business, all activities in the business accrue evenly throughout the year. ये बहुत सारा इंग्लिश में एक साथ बोल गया. ये इंग्लिश को समझेंगे कैसे? Can anyone interpret what I am trying to explain from this statement? All activities accrue evenly throughout the year. बोलो, इसका मतलब क्या हो सकता है? अंदाजा लगा सकते हो आप? Spread to each day. हाँ, correct. Arun Sagar is correct. Have you heard of this statement before in any of the papers? All months expenses. Not just expenses. मैंने क्या लिखा है? All the activities in the business. Even the sales will accrue equally, not just expenses. Example. Let's say आने वाले साल में I am estimating sales of 12 lakh. ठीक है? So 12 lakh. प्रैक्टिकली ऐसा तो जरूरी नहीं है कि एवरी मंथ सेल वुड बी 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख. प्रैक्टिकली अप्रैल में 5 लाख हो सकता है, फिर धंधा मंदा हो गया, बिजनेस वेंट डाउन, सो अगस्त सितंबर में कुछ ना भी हो सेल्स, देन अगेन इट मे गो अप. This is how actual sales work. But with the help of this assumption, we will assume कि if entire year sales is 12 lakh, then sales in Jan would be 1 lakh, sales in February month would be 1 lakh, sales in October month would be 1 lakh, sales in any month, June month it would be 1 lakh, sales in December month it would be 1 lakh. Understood? But real में ऐसा नहीं होता. It depends on the seasons. जैसे सीए की सीजन होती है जुलाई अगस्त सितंबर, दिस इज द बिजिएस्ट सीजन फॉर सीए. ठीक है. सो इस महीने में वो सीए अर्न्स मोर, द प्रैक्टिसिंग सीएस. आर यू फॉलोइंग? बट विद द हेल्प ऑफ दिस अजम्पशन कैन आई से फ्यूचर को एस्टिमेट करना है, तो जैन में हाउ कैन वी एक्यूरेटली एस्टिमेट कि 5 लाख का सेल होगा. अंडरस्टूड? सो दैट्स help of this assumption that unless otherwise specified, all activities in the business accrue evenly throughout the year. They are spread evenly throughout the year. Okay? So with this example, can I say every month sales would be same? Correct? And total I will get 12 lakhs for the entire year. Correct? पूरे महीने का sales, let's say this is Jan का sales. So in entire Jan month, we did a sales of 1 lakh. So can I say per day sales would be 1 lakh divided by 31? Yes or no? So this would mean all activities accrue evenly means 1 lakh divided by 31 means कितना आ रहा है? जो भी आ रहा हो. Let's say 3000 आ रहा है. For example 3500 आ रहा है. जस्ट अ रैंडम एग्जाम. तो जैन 1 को सेल वुड बी 3500, फिर दूसरे दिन जैन 2 को आर सेल वुड बी 3500 एंड सो ऑन. अंडरस्टूड? सो ईच डे सेल विल ऑल्सो बी सेम. दिस इज व्हाट assumption is trying to say. Clear? Not just with sales, even with expenses, this same assumption we need to follow. Clear? So let's say पूरे साल में my purchases are 6 lakh. So it means 50,000 purchases, 50,000 rupees worth purchases would be in Jan, Feb, March, April, like till December. Clear, everyone?
Understood what activities accrue evenly throughout the year means? Acha, not just with purchases. If this assumption holds true, then even stock will remain same. See, जैसे sales per day remain same, तो even stock value will remain same. Are you following? So Jan 1 का आप stock देखोगे, let's say it is 3000. तो Jan 2 में stock will be 3000 only. Jan 3 में 3000. And likewise, 31st December को भी if you see the stock, it will be 3000. Are you following? So at any time you visit the go down, 3000 का stock पड़ा होगा. This is what assumption is trying to say. Are you following? आज आपने गोडाउन में जाके ताला खोला, यू सी ओ 3000 का स्टॉक, वापस जाओ 3000 का स्टॉक दिखेगा. Are you following? हाँ, ये पूरा जो बिक गया तो नहीं आ गया 3000 का. Just visualize. Are you following? So with the help of this assumption, even the stock is remaining same. Just like, see, all activities remain are spread evenly. Are you following? So all activities you have to include stock as well. Are you following? Okay, so can I say opening stock and closing stock would remain same? Yes or no? With the help, if we assume this assumption number one to hold true, then opening stock and closing stock will obviously remain same. Okay? But again, this assumption will hold true unless otherwise specified. So if specific information or some hints is given in the question, hints are given in the question, then in that case, this assumption will not hold true. Clear? But if nothing is mentioned, this assumption holds true. All activities accrue evenly throughout there. Next, assumption number 2. हमारा working capital estimation will be for that business organizations who are into manufacturing industry. Everyone, Telegram channel has been shared with you all. DOS team has just shared the Telegram link. Okay. So assumption number 2 is हम जो भी वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन की एक्सरसाइज जो करेंगे ना, वो कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की करेंगे? ओनली दोज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हु आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. आर यू फॉलोइंग? सो नो problem on trading industries there in your module. No problem from service industries also there in your module. The simple logic behind this is, of these three industry, manufacturing, trading, service, the most complicated is manufacturing industry. Are you following? Manufacturing में तो स्टॉक में भी रॉ मटेरियल WIP FG आता है. सर्विस में तो स्टॉक जैसा कुछ होता ही नहीं है. Trading में you have only FG stock. Are you following? So most complex of all these three industries, of amongst these three is manufacturing. So instead है ना, इतना सिंपल है. If you learn how to estimate the working capital of manufacturing industry, then by default you know trading and service because they are not that complex. Are you following? Understood everyone? So this is assumption number 2. So this is not ideally assumption. I would say this is a general note for this question for this chapter. कि सारे practical problems are considering manufacturing industry. Clear? And last but not the least, we will estimate working capital. Estimation of future. Estimation is of future. Past का working capital तो बीत गया है. That is sunk for us. So we will estimate working capital for the upcoming year. Are you following? आने वाले साल में, पूरे साल में, आने वाले पूरे साल में कितना working capital चाहिए, that we will estimate in this chapter. Are you following? See, practically है ना, practically what business organizations do you know? Business organizations go to the bank for funding this working capital requirements. उनको जितना भी working capital needs होता है ना, they go to the bank for working capital loan, or if you have heard cash credit facility, working capital loan, this all is nothing but financing of working capital. तो कभी भी है ना, financial institution or banks, they never fund for your entire year का working capital.
आने वाले पूरे साल में कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए? दे नेवर फंड एंटायर अमाउंट, दे आइदर फंड फॉर योर 3 मंथ्स नीड्स। आने वाले 3 महीने में आपको वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा, दैट फंडिंग दे डू, मे बी 4-5 मंथ्स और मैक्स 6 मंथ्स। इससे ज्यादा जनरली बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नेवर फंड्स फॉर वर्किंग कैपिटल। हाँ, फिर नेक्स्ट 6 महीने के लिए वापस आप एस्टिमेट करो and then again place to the bank for new financing. Are you following everyone? But since we are in academics, our assumption is हमें जो भी वर्किंग कैपिटल, हमारा जो भी अमाउंट आएगा ना, लेट से 15 लाख वर्किंग कैपिटल आता है, तो दिस 15 लाख इज नथिंग बट आने वाले साल में वर्किंग कैपिटल दैट यू रिक्वायर्ड पूरे साल में। क्लियर एवरीवन? सो दिस आर द 3 assumptions बोलो और आई कैन से जनरल नोट्स बोलो ऑफ दिस चैप्टर, बट यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में ये डाउट नहीं आने चाहिए सर ऐसा क्यों हमने लिया इस क्वेश्चन में। सो यू हैव टू जस्ट क्विकली रिकलेक्ट कि हाँ assumption नंबर 1 सर ने बताया था। अंडरस्टूड? एनी डाउट स्टिल हियर? एनी क्वेरीज? सी वी आर इनटू द चैप्टर नाउ, हम चैप्टर में घुस गए हैं। सो नाउ देयर इज नो ऑप्शन ऑफ टर्निंग बैक। Quickly respond. If no response, I will move forward. Clear. Okay. Now, now again, see, we are a students of a professional course. We know कि working capital is CA minus CL. So our way of solving, our presentation should be in a professional manner, should be in an organized way. ठीक है? So हम working capital जो estimate करेंगे ना, ऐसे चिंदी जैसा नहीं करेंगे, सीए माइनस सीएल बस इतना सीए में यहाँ डेटर्स लिख दिया या कैश का बैलेंस लिख दिया, फिर यहाँ स्टॉक लिख दिया, फिर यहाँ माइनस क्रेडिटर्स 50,000, ये टोटल हुआ लेट से 230, ये हुआ 50, 230 माइनस 50, 180। नो, दिस इज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ सॉल्विंग। ठीक है, दिस इज नाइव वे ऑफ सॉल्विंग। जो हाँ 9वीं 10वीं 11वीं में आप ये करते थे, दैट्स फाइन, 11वीं 12वीं में इट्स ओके, बट नाउ यू आर अ स्टूडेंट्स ऑफ प्रोफेशनल कोर्स। आप जब सीए बन के एज अ प्रोफेशनल बाहर निकलोगे ना, सो इफ यू प्रेजेंट लाइक दिस, पीपल विल नॉट वैल्यू यू। They know you are a professional, so they know, they wish that your way of solving, way of approaching has to be organized and professional. ठीक है? So in short कहने का मतलब इस चैप्टर में भी to estimate working capital there is a standardized format. So use that standardized format, use that organized format to calculate your working capital. Don't be unorganized. ठीक है? Be organized in your life. Clear? So next concept, not concept, but within estimation of working capital, we will learn the format for estimation of वर्किंग कैपिटल। ठीक है, सो आइडियली मोटा मोटी तो हमें पता है सर वर्किंग कैपिटल में अल्टीमेटली 2 ही चीज करनी है, वन इज करंट असेट्स, करेक्ट, एंड उसमें से वी हैव टू सब्ट्रैक्ट करंट लायबिलिटीज। दिस इज द टॉप मोस्ट गोल ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ दिस चैप्टर। करंट असेट में से करंट लायबिलिटीज सब्ट्रैक्ट करनी है। अब करंट असेट में वन बाय वन वी विल राइट डाउन इट्स लाइन आइटम्स, जनरल लाइन आइटम्स। कहना इसे इन्वेंट्री होगा, यस और नो, इन्वेंट्री होगा। अच्छा, नाउ वी आर एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल फॉर बिजनेस विच इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग। तो कहना इसे इन्वेंट्री में भी 3 चीज दिखेगी, रॉ मटेरियल, some goods would be under process, WIP, then there would be some goods in stock for FG as well। ठीक है, so inventory में further 3 types of stock you will see, RM का stock,
WIP का stock, FG का stock. Clear? So stock line item is done. Then sir, we will also see current asset में something called as receivables या debtors. ठीक है? There would be some cash balance with itself for emergency expense. ठीक है? Fourth but not the least, fourth अदर करंट असेट्स. इसमें आपका सब प्रीपेड वगैरह आ गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आ गए. दैट ऑल विल गेट कवर्ड इनटू अदर करंट असेट्स. ठीक है? सो द सम ऑफ ऑल करंट असेट्स इज टेक्निकली कॉल्ड एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. ये टैक्सेशन में होता है ना, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, उसमें से फिर वी डिडक्ट समथिंग एंड देन वी फाइंड नेट टैक्सेबल इनकम. आर यू फॉलोइंग? सो यहाँ पे भी सेम, sum of all current assets, sum of all the heads of income, you call it as gross total income. Here we will call it as gross working capital, sum of all the components of current asset. फिर इसमें से less नंबर बी करंट लायबिलिटीज. क्लियर? करंट लायबिलिटीज. अब करंट लायबिलिटीज के भी कुछ कंपोनेंट्स हो गए. क्रेडिटर्स, we would be having some outstanding expenses. Yes or no? There would be some bank OD as well. So bank OD आप लिख सकते हो. शॉर्ट टर्म लोन्स भी हो सकता है. So that all we can group under other current liabilities as well. ठीक है? So if we subtract current liabilities from current asset, the resultant figure is called as excess of, नहीं थोड़ा ट्विस्ट है यहाँ पे, एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटीज. ठीक है? एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज. एंड टू दिस अमाउंट वी एड समथिंग कॉल्ड एज सेफ्टी मार्जिन, and the final figure is now called as net working capital required. Net working capital required. Okay, now what is safety margin? See, फिलहाल इस चैप्टर में हम जो भी वैल्यू ढूंढने वाले ना, लेट्स से एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज कम्स टू 10 लाख रुपीस. ठीक है? इज दिस एक्यूरेट अमाउंट? इज दिस एक्चुअल अमाउंट की एस्टिमेटेड अमाउंट? ये जो एक्सेस ऑफ सीए माइनस सीएल करके जो वैल्यू आएगी, एक्चुअल अमाउंट है कि एस्टिमेटेड है? ये एस्टिमेटेड. करेक्ट? सो एस्टिमेशन में कुछ गलती भी हो सकती है हमारी. So there are chances of some margin of errors in our estimation. Yes or no? So to remove that margin of errors, we bring safety margin. To be on a conservative basis, we add some safetyness, safety cushion. ठीक है? So मान लो you estimated 10 lakh rupees. तो मैं क्या बोलूंगा, 10 lakh estimated आ रहा है ना, तो मुझे बैंक से 12 लाख का फाइनेंसिंग लाने दो, टू बी ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस. ठीक है? What if in case फ्यूचर में 2 लाख एक्स्ट्रा लग गए तो? Because this is an estimated amount, it is not actual amount. So your estimation may have some margin of errors. So to remove that margin of errors, to be on a conservative basis, we add some safety margin. ठीक है? अब ये सेफ्टी मार्जिन का परसेंटेज आपको क्वेश्चन में ही बोला होगा. If question is silent, then we ignore safety margin. Are you following? So excess of current asset over current liabilities, in that case would be your net working capital required. Are you following? So let's say if safety margin is 20%. So what I will do, मेरे estimation के हिसाब से 10 लाख आ रहा है. Let me be on a conservative side. Let me assume मुझे 12 लाख working capital लगेगा. Followed. A FG is finished goods. Hey, I hope RM, FG, WIP is all clear to you all. Costing is done, na? So RM is raw material, WIP is work in progress, FG is finished goods. Clear? So understood what is safety margin? It is margin to be on a conservative side, because
the amount that we calculate over here is not the actual amount, it is estimated amount. Okay? So for some additional cushion, we add the safety margin. So if you just quickly want to take the screenshot, अच्छा अभी फिलहाल स्क्रीनशॉट मत लो बिकॉज नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज सर फॉर्मेट तो बना दिया, अब सबकी वैल्यूज तो भरनी पड़ेगी ना, सबकी वैल्यूज तो एंटर करनी पड़ेगी, तब जाके फाइनल अमाउंट मिलेगा. हाँ, नाउ सो आवर नेक्स्ट टास्क इज टू लर्न हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. ठीक है, how to calculate, how to find the value of each working capital. ठीक है, that is our next task. Now listen very carefully. The source document for these values, ये values हमें जो भरनी है उसका source document, your primary document would be your cost sheet, cost summary. कॉस्ट शीट बोलो या एफएम में उसको इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं. कॉस्ट शीट में अल्टीमेटली कॉस्ट के बाद आप प्रॉफिट ऐड करके सेल्स पे ही आते थे. सो कॉस्ट शीट बोलो, इनकम स्टेटमेंट बोलो, इट इज एवरीथिंग इज सेम, द मीनिंग इज सेम. ठीक है, सो द सोर्स डॉक्यूमेंट टू कंप्लीट दिस टेबल, सी कंपोनेंट्स लिख दिए बट साइमल्टेनियसली पैरेलली वी हैव टू फाइंड इट्स अमाउंट एज वेल. तो अमाउंट ढूंढने के लिए द सोर्स डॉक्यूमेंट over here would be your cost sheet. ठीक है, so from working note number 1 we will prepare cost statement. Are you following? And this cost statement is more or less same to your cost sheet. बट जो आप कॉस्ट शीट आपने कॉस्टिंग में जो सीखा है ना, that was very huge. यहाँ पे उतना बड़ा कॉस्ट शीट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. वी हैव compressed that large cost sheet into a smaller size to the extent required in FM. Are you following everyone? So पूरा डिटेल कॉस्ट शीट उतना 3 पेज का बनता था, कभी कभी तो 2 पेज का भी बनता है. सो उतना डिटेल्ड विल नॉट बी ओवर हियर. ठीक है, वी हैव compressed that into a smaller version. Clear? So कॉस्ट शीट अगर हम देखें तो कैन आई से कॉस्ट शीट में फर्स्ट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, देन वी हैव डायरेक्ट लेबर. ये दोनों को ऐड करते हैं तो आइडियली प्राइम कॉस्ट होता है. ठीक है, ठीक है, बट यार वो सब नहीं लिखना है. वी विल डायरेक्टली ऐड आवर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स. आर यू फॉलोइंग एवरीवन? सो व्हाट I will get is, don't write, just listen. Gross factory cost, पूरे फैक्ट्री में खर्चा कितना हुआ, that is gross factory cost. Clear? फिर इसमें आप एड ओपनिंग WIP करते थे, लेस क्लोजिंग WIP करते थे, and the resultant figure was called as cost of production. Yes or no? This is what you have learned in cost sheet. But now, very important. याद करो assumption number 1, कुछ ही टाइम पहले मैंने समझाया था. If nothing is specified, can I say all activities accrue evenly throughout the year? Means सारे स्टॉक ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो सेम रहेंगे. तो कैन आई से जो ओपनिंग WIP होगा वही सेम क्लोजिंग WIP होगा. Yes or no? So ideally, can I write gross factory cost as cost of production, because the value of these two will remain same only. So let's say this is 10,000, दोनों ओपनिंग WIP भी 10,000 है, क्लोजिंग भी 1,000 है, ये तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 10,000 ओनली, नो इफेक्ट. करेक्ट? सो इन अदर वर्ड्स मैं यहाँ पे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के जगह डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखूं, इट विल नॉट मैटर इन दिस चैप्टर इफ assumption number 1, all activities accrue evenly throughout the year, holds true. Clear everyone? Okay, cost of production के बाद कहना है से हम ओपनिंग FG ऐड करते थे, उसमें से क्लोजिंग FG माइनस करते थे, सो वी वुड गेट COGS, cost of goods sold. ठीक है,
Again, assumption number one, if it holds true, can I say opening, closing remain same, no effect? Yes or no? So can I write cost of production as COGS? क्लियर? तो इसको मैं COGS भी लिख सकता हूं. अंडरस्टूड एवरीवन? अच्छा, COGS के बाद वी यूज टू ऐड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस. एडमिन एक्सपेंस, फिर ऐड करते थे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस. एंड अल्टीमेटली हमें टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलता था. क्लियर? फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स में वी ऐड प्रॉफिट, वी गेट सेल्स. सो आप देखो हमारी कॉस्ट शीट कितनी कॉम्प्रेस हो गई because of some of the standard assumption, by default assumption that all activities accrue evenly throughout there. अच्छा, again admin expense में क्या होता था? If admin expense is related to production तो वो फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करते थे, वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाएगा. आर यू फॉलोइंग? मान लो फैक्ट्री चलाने के लिए भी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा होता है ना. So if admin expense is related to factory, if it is related to production, तो वो यहाँ आ जाएगा factory overheads में. But if question is silent, we will assume it is general admin expense. Are you following? Not related to production. इसलिए हमने cost of production के बाद उसको ऐड किया है. Clear? So the admin expense that I have added after cost of production is nothing but general admin expense, which is not related to production. हाँ, अगर प्रोडक्शन रिलेटेड एडमिन एक्सपेंस है तो उसको फैक्ट्री ओवरहेड्स में, फैक्ट्री के कॉस्ट में ही ऐड करना. क्लियर? हाँ, डेप्रिसिएशन, इफ डेप्रिसिएशन इज ऑन मशीनरी, कैन आई से मशीन इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में ही जाएगा. क्लियर? बट अदर जनरल, लेट्स से बैक ऑफिस में एक टीम बैठी है, उनके सारे लैपटॉप्स इज जनरल एडमिन एक्सपेंस. आर यू फॉलोइंग? उसका डेप्रिसिएशन विल कम ओवर हियर. बट आर यू फॉलोइंग एवरीवन? सो इफ एडमिन एक्सपेंस इज directly related to production, then it will get added to factory overheads. But if it is general admin overheads, general admin expense, we will add after cost of production because it is not included in production cost. Following everyone? So this is the standard format of cost statement. बोलो, income statement बोलो, cost summary बोलो, जो बोलना है बोल सकते हो. Clear? So, can I say I gave you an approach to solve the question of this chapter? जब भी मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, उसमें भी एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन आए, योर फर्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर द फॉर्मेट. फर्स्ट स्टेप, ऑलवेज टारगेट द फॉर्मेट. सेकेंड स्टेप, प्रिपेयर वर्किंग नोट नंबर 1. ठीक है? फिर क्वेश्चन को वापस पढ़ो. एक बार आपने देख लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया, ओ एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल है, सीधा फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करो, सीधा वर्किंग नोट 1 का फॉर्मेट, कॉस्ट स्टेटमेंट स्टार्ट करो, एंड देन यू प्रोसीड फॉर. अंडरस्टूड एवरीवन? सो डिड यू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट? ए फॉर्मेट इज नथिंग बट CA minus CL, but it looks more organized, it looks more professional, it creates good impression. क्लियर? फॉर्मेट सीख लिया, अब उसकी वैल्यू कहां से भरनी है, दैट ऑल्सो वी अंडरस्टूड कि कॉस्ट शीट से भरनी है. बट कॉस्ट शीट में भी वैल्यू तो डालनी पड़ेगी फ्रॉम सम डेटा. सो हाउ टू फिल कॉस्ट स्टेटमेंट, दैट नाउ वी विल लर्न यूजिंग अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. क्लियर टिल हियर? अब हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेते हैं जिससे हमें सारी फॉर्मूलाज भी समझ जाएगी, कॉस्ट शीट कैसे बनेगी वो भी समझ जाएगा, वर्किंग कैपिटल द मेन फॉर्मेट में वैल्यूज कैसे एंटर होगी वो भी समझ जाएगा. सो नाउ द मेन टास्क. अभी तक जो भी सो रहा था या सो रहा है तो अब जाग जाओ. ठीक है? सो नाउ द क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कम्स, बिकॉज सी एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड बाय इंस्टीट्यूट. हर 5 अटेम्प्ट में आप 4 बार तो देखोगे, 3 से 4 बार तो वो क्वेश्चन होता ही है. ठीक है? सो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. So now, how to fill up the values of cost sheet of the main format? Let's understand through illustration.
सो कम टू मॉड्यूल 2, उसमें मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ओपन करो। ये क्या हो गया? Module 2, Management of Working Capital. See, can you see many units under that? फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है, जो हमारा चल रहा है। उसमें एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल आ गया, उसमें ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आ गया, फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल आ गया। सो द पॉइंट 456 इज कवर्ड इन इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। फिर सेकेंड इज कैश मैनेजमेंट, यूनिट 2 इज कैश मैनेजमेंट, जिसमें हम कैश बजट और ऑप्टिमम कैश बैलेंस कितना होना चाहिए दैट वी विल फाइंड। थर्ड इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जस्ट रीड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एक ही पेज का चैप्टर है। मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री हैज बीन डिस्कस्ड इन डिटेल इन चैप्टर 2 मटेरियल कॉस्ट। स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू रिफर द सेम, ठीक है। सो एफएम में नथिंग एल्स अबाउट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्लियर? सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट वी विल नॉट डू। देन वी हैव रिसीवेबल्स मैनेजमेंट जो हमें सीखना है, पेबल्स मैनेजमेंट जो हमें सीखना है, एंड फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल है ना, उसमें छोटा सा टॉपिक है। फिर सारे यूनिट्स के कंबाइंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। अरे फॉलोइंग, सो यूनिट 6 इज लिटिल पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट, एंड फिर सारे ये जो यूनिट 1 to 5 है ना, एक्सेप्ट फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वो कॉस्टिंग में, उसके सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस यूनिट 6 में। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम टू यूनिट 1। अब यूनिट 1 में कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 1। फर्स्ट इलस्ट्रेशन एकदम डिटेल में समझना है, बिकॉज उसमें ही सारी फॉर्मूला सिखा होगा, उसमें ही हाउ टू फिल द कॉस्ट स्टेटमेंट सिखा होगा, उसमें से ही हाउ टू फिल द वर्किंग कैपिटल फॉर्मेट वो भी सिखा होगा। तो यू जस्ट फोकस ऑन नॉट इलस्ट्रेशन 1 बट इलस्ट्रेशन 3, illustration number 3. So everyone come to illustration number 3, open your modules। फिजिकल है तो फिजिकली ओपन करो, पेज 9.25, यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल। ऑन 1st January, the managing director of Norin Limited wishes to know the amount of working capital that will be required during the year। So means आने वाले साल में कंपनी को वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा वो जानना है। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर द वर्किंग कैपिटल फोरकास्ट। फोरकास्ट इज नथिंग बट एस्टिमेट, ठीक है। सो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ के ही मुझे एग्जाम में पता चल जाएगा कि दिस इज ऑन एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये तो कहना है से माय फर्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर द फॉर्मेट, yes or no? So can I say my format for the time being is ready? Because ये सारी चीजें मैं वापस नहीं लिखूंगा, because it will take additional time. So let's assume मेरा format ready है, this is my format। in your books you can start preparing the format, अगर आपको लिखना हो तो। नहीं लिखना हो, सिर्फ सुनना हो तो it is your choice again। So my format is ready, current assets less current liabilities। ठीक है। सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। प्रोडक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वाज 60,000 यूनिट्स। ये तो पूरे साल में यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इज 60,000। सो यहाँ पे कॉस्ट शीट में आई एम जस्ट राइटिंग 60,000 यूनिट्स इज द प्रोडक्शन विच इज सोल्ड। ओके, it is planned that this level of activity would be maintained during the present year। Hey, sorry, this 60,000 was in previous year। 60,000 units were produced and sold in previous year, but इस साल में, आने वाले साल में भी सेम रहने वाले। दिस इज व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग।
the expected ratios of the cost to selling prices are raw material 60% to selling price. ये मतलब कहना है से अगर मेरा सेलिंग प्राइस 10 रुपया होता है तो रॉ मटेरियल कॉस्ट वुड बी 6 rupees. Everyone, come on. Wages would be, can I say, 1 rupee if the selling price is 10, and overheads would be 2 rupees. Understood? So 6 plus 1, 7 plus 2, 9. 1 rupee would be profit. Are you following? So this cost are in the ratios to sales. Are you following? Cost to sales ratio. Hey, raw materials are expected to remain in store for an average of 2 months before issue of production. What does this mean? This अब जो सारे स्टेटमेंट आएंगे ना वो आप पहली बार अपने लाइफ में पढ़ोगे, एंड दिस ऑल स्टेटमेंट्स आर वेरी क्रिटिकल फॉर दिस चैप्टर. यस, होल्डिंग पीरियड, it मीन्स मैं जहां से रॉ मटेरियल खरीद रहा हूं, रॉ मटेरियल खरीद लिए, आई विल नॉट on the spot throw it that raw material into the machine. I will store it for some period and then I will throw it, then I will enter it into the machine. Are you following? Because raw material खरीद के लेके आया, but कहना से लेके आया तब कुछ ना कुछ raw material मशीन में चल रहा होगा. So I cannot directly just throw and enter it into the machine. So I need to store it, I need to hold it for some period, and that holding period, that storage period is 2 months. Clear? अब इसका ये 2 months का दूसरा मीनिंग क्या होता है? We will understand in very few minutes. Each unit is expected to be in process for 1 month. Hey, what does this 1 month do you think? ये 1 month क्या है? क्या लग रहा है? What do you think this is 1 month? Yes, perfect. अरुण सागर, perfect. WIP means प्रोसेस में 1 महीने का समय लगता है. मींस आज मैंने रॉ मटेरियल मशीन में डाल दिया तो मशीन में रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए 1 महीना लगेगा. वर्क इन प्रोग्रेस. यस, वर्क इन प्रोग्रेस. ठीक है. बीइंग फेड, रॉ मटेरियल बीइंग फेड अप immediately and labor and overheads cost accrue evenly throughout the month. Okay. FG will stay in the warehousing awaiting dispatch to the customers approximately 3 months. बोलो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? पीरियड स्टोर एट गो डाउन. ए विजुअलाइज ना, मशीन से फिनिश गुड्स निकल गया, निकल रहा है, एफजी निकल रहा है. ये क्या कस्टमर बाहर फैक्ट्री में ही मशीन के बाहर ही लाइन लगा के खड़ा होगा, हो फिनिश गुड्स इज रेडी, बस लेके जाता हूं. No, even sales takes some time. Marketing person will do their job, sales person will do their job. So till then हमें FG को स्टोर करके रखना पड़ेगा. That is 3 months. Clear? Not overheads. FG remains in stock, remains in warehouse for 3 months before it gets converted into sales. Are you following? कस्टमर बाहर लाइन लगा के नहीं खड़ा होगा कि जैसे ही मशीन से गुड्स निकलता है मैं लेके भाग जाता हूँ. ऐसा नहीं होता. इट टेक्स सम टाइम ना. मशीन से आज निकला है, थोड़े टाइम बाद वो सेल्स में जाएगा. सो टिल देन वी हैव टू स्टॉक इट, टिल देन वी हैव टू स्टोर इट. दैट इज 3 months. एफजी होल्डिंग पीरियड, एफजी स्टोरेज पीरियड. क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स इज 2 months. मींस जो सप्लायर से हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, दे आर गिविंग अस 2 months क्रेडिट. क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स, हम जिस कस्टमर को सेल्स कर रहे हैं, एंड वी आर अलाउिंग दैट कस्टमर्स 3 months क्रेडिट. सेलिंग प्राइस इज 5 per unit. मैंने जो एग्जांपल में 10 per unit लिया था, कैन आई से इट इज 5 per unit in this question? So can I say if selling price is 5 per unit, can you tell me raw material का cost कितना होगा per unit? How much would be raw material? It is 60% to sales price. 3 rupees, correct? Labor 10% to sales price means 0.5. Overheads, other production overheads 20%, 1 rupee. So in short, can I say my cost of production, my COGS is 4.5 per unit. Any information on admin, selling expense, selling and distribution expense, sales promotion expense नहीं दिया है. ठीक है. So we will ignore. In this question we will ignore.
होगा तो लेने का, नहीं है तो नहीं लेने का। तो कहने से माई कॉस्ट ऑफ सेल्स कम्स टू 4.5 रुपीज, माई प्रॉफिट कम्स टू 0.5 पर यूनिट। क्लियर एवरीवन टिल हियर? एनी डाउट्स, एनी कंसर्न्स? ओके, so can I quickly complete the cost statement now? A per unit मिल गया and I have total number of units. So can I calculate amount in rupees? 60,000 into 3, 1,80,000. 60,000 into 0.5, 30,000. 60,000 into 1, 60,000. ठीक है, so 180 plus 60, 240 plus 30, 270. Either you term it as cost of production or either you term it as COGS. It is one and the same. Why? Because opening FG, closing FG will have same value. Same value क्यों होगी? Because standard assumption number one, all activities accrue evenly throughout the year. ठीक है? If so, कहना admin zero, selling zero. So my total cost of sales will be 270. Sales is 5 per unit. So 60,000 into 5. 3 lakh would be my sales. And when I say balance 30,000 is my profit balancing figure. So बातों बातों में, not just बातों बातों में, but समझ के भी we completed the cost statement. Clear everyone? So cost statement, any doubts? If you want to take the screenshot of cost statement, income statement, just quickly take in 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. ठीक है? So our source document to complete our original format is ready. ठीक है? मेन फॉर्मेट इज एस्टिमेटिंग द वर्किंग कैपिटल, उसमें सारे कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल हमें ढूंढने हैं। मैंने बोला उसका सोर्स डॉक्यूमेंट इज कॉस्ट स्टेटमेंट, दैट इज रेडी। नाउ वी हैव टू कंप्लीट आवर ओरिजिनल फॉर्मेट। सो लेट्स स्टार्ट विद रॉ मटेरियल स्टॉक। फर्स्ट क्या है? आरएम स्टॉक है, करेक्ट। इन्वेंट्री ऑफ आरएम मींस आरएम का स्टॉक कंपनी में कितना पड़ा होगा, दैट वी नीड टू कैलकुलेट। सो what is the raw material consumption? How much is the raw material consumption of the company in entire year? Can you just see the cost statement and let me know? पूरे साल में हमने रॉ मटेरियल कितना वापरा होगा? 1,80,000, ठीक है। सो इन एंटायर 1 year पीरियड, इन एंटायर 12 months पीरियड, our raw material consumption is 1,80,000, ठीक है। How much months? How much is the storage period of raw material? 2 months. So this 2 months, the other meaning is पूरे 12 महीने का our consumption was 1,80,000. Proportionate to 2 months of 1,80,000 is the stock of RM. This is what interpretation number 2 of holding period is. ये था ना, होल्डिंग पीरियड ऑफ रॉ मटेरियल इज 2 months। ये 2 months वी नो कि हम रॉ मटेरियल स्टॉक 2 महीने के लिए रखेंगे। बट जो स्टॉक गोडाउन में रखेगी उसकी कुछ वैल्यू होगी ना। 2 महीने के लिए आपने रॉ मटेरियल स्टॉक गोडाउन में रखा, उसकी कुछ वैल्यू होगी। सो दैट वैल्यू इज प्रपोर्शनेट टू 2 months ऑफ एनुअल कंजम्पशन। आर यू फॉलोइंग हाउ टू इंटरप्रेट दैट 2 months? क्लियर? पूरे 12 महीने में आर कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन वाज 1,80,000, equivalent or proportionate to 2 months of this annual consumption is in the stock. Are you following? Because हम यहाँ मेन फॉर्मेट में आरएम स्टॉक में 2 months नहीं लिख सकते। वी हैव टू असाइन सम वैल्यू, वी हैव टू असाइन सम अमाउंट। तो कितना आया? विल बी 1,80,000 into 2/12. Yes or no? Are you following everyone? 30,000, correct? 30,000 is correct answer. But if you closely understand, हमने बातों बातों में एक फॉर्मूला बना दी।
फॉर्मूला क्या बनी? व्हाट इज दिस 180? कैन आई से दिस इज रॉ मटेरियल कंजम्पशन? yes or no? What is this 2? This is, can I say, raw material holding period? Are you following? Divided by 12. So you get answer in months. If you divide by 365, you get answer in days. If you get divide by 52, you get answer in weeks. ठीक है? सॉरी, अगर ये सी फिलहाल मंथ्स में दिया है इसलिए हमने 12 किया. अगर मान लो ये डेज में दिया होता तो वी वुड हैव डिवाइडेड बाय 365. यही चीज रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड वीक्स में दी होती, वी वुड हैव डिवाइडेड बाय 52. Followed everyone? So this is the formula to calculate RM stock. A formula समझी? Any doubts in this? So proportionate to 2 months of annual raw material consumption is my stock. So अब आपने जो मेन फॉर्मेट लिखा है ना, मेन फॉर्मेट जो आपने प्रिपेयर किया है ना, रॉ मटेरियल स्टॉक के बाजू में you write the formula. It is nothing but raw material consumed into raw material होल्डिंग पीरियड. होल्डिंग पीरियड बोलो या स्टोरेज पीरियड बोलो, इट इज वन एंड द सेम. डिवाइड बाय 12, 365, 52. क्लियर? एंड इन दिस केस आवर आंसर इज कमिंग टू 30,000. क्लियर एवरीवन? सो आपने जो ओरिजिनल फॉर्मेट बनाया है उसमें रॉ मटेरियल स्टॉक की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? सो बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला. आर यू अंडरस्टैंडिंग? So raw material is based on its raw material consumption. Clear everyone? Please type your query in the chat box. Now, before moving to WIP, let's first target FG. ठीक है? So जैसे raw material is based on raw material consumption, can I say finished goods? Finished goods. Can I say it will be based on? Yes, raw material consumption is annual consumption. ये 1,80,000 is annual consumption ना. 60,000 पूरे साल के यूनिट्स into 3. So 180 is annual consumption. Into raw material holding period divided by 12. Clear? So पूरे साल में मेरा कंजम्पशन था 180. Proportionate to 2 months of this annual consumption is in my stock. ये बिकॉज मैं फॉर्मेट में आंसर में 2 months नहीं लिख सकता. आई हैव टू डिराइव सम, आई हैव टू असाइन सम वैल्यू. आर यू फॉलोइंग? सो बिफोर मूविंग टू WIP, आई विल मूव टू FG. सो वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ FG स्टॉक. जैसे रॉ मटेरियल इज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल कंजम्पशन, कैन आई से फिनिश्ड गुड्स विल बी बेस्ड ऑन गुड्स सोल्ड. कौन सा गुड सेल करेंगे? जो फिनिश्ड होगा वही सेल करेंगे ना. विल वी सेल अनफिनिश्ड गुड्स? वी विल नॉट सेल अनफिनिश्ड गुड्स. सो कैन आई से इफ रॉ मटेरियल इज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल कंजम्पशन, FG will be based on COGS. करेक्ट? सो पूरे 12 months का COGS is how much? Just look at your cost statement. How much is the total COGS for entire year? 2,70,000. Clear? So पूरे साल में cost of goods sold is 2,70,000. How much is my FG holding period? 3 months. So proportionate to 3 months of COGS is my FG. बिकॉज मैं फॉर्मेट में FG स्टॉक के बाजू में 3 months नहीं लिख सकता. आई नीड आंसर इन रुपीज, इन अमाउंट, इन सम वैल्यू. आई हैव टू असाइन सम वैल्यू. सो proportionate to 3 months. Are you following? This is FG holding period. How much would be my FG stock? This is FG stock. क्लियर? कितना आया? 67,500. क्लियर? ये तो कहना है से अगेन मेरी फॉर्मूला बन गई FG स्टॉक के लिए. इट इज नथिंग बट हमने क्या किया? 270 into 3/12 किया. Yes or no? We just simply cross multiplied. We interpolated. So 270. Can I say it is nothing but COGS? 3 months is nothing but FG holding period divided by 12. 365, 52 depending on the measurement that is given. Months में है तो 12, days में है तो 365, weeks में है तो 52.
So this is the formula to calculate FG stock. ये समझा सबको? Any doubts? How formula is created? See, अब formula रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. I explained you the logic behind that as well. ये आया कैसे? Clear? So come to the main statement. जहां पे आपने एफ जी स्टॉक लिखा है ना, वहां पे यू जस्ट राइट द फॉर्मूला एज वेल. सो एफ जी स्टॉक इज नथिंग बट COGS into FG holding period divided by 12, 365, 52. And answer, I am believing your calculations, 67,500. ठीक है. WIP still left, लास्ट में कवर करेंगे बिकॉज उसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है. ओके, नाउ डेटर्स बोलो. FG is based on goods sold. एक है ना, इसे डेटर्स विल बी बेस्ड ऑन सेल्स. ये डेटर्स का जन्म, डेटर्स का बर्थ कहां से होगा? जब क्रेडिट सेल्स होगा तो ही होगा. सेल्स वैल्यू करेक्ट, बट उसमें भी क्रेडिट सेल्स. समटाइम्स क्वेश्चन में गिव कैश सेल्स एज वेल. सो कैश सेल्स निकाल देना है टू कैलकुलेट डेटर्स. आर यू फॉलोइंग? सो डेटर्स आर बेस्ड ऑन क्रेडिट सेल्स. So with same analogy, can we derive some formula for debtors? Calculation of debtors. ठीक है. पूरे 12 महीने में कहना इसे फर्स्ट ऑफ ऑल डेटर्स इज बेस्ड ऑन क्रेडिट सेल्स, नॉट जस्ट सेल्स, क्रेडिट सेल्स. इस क्वेश्चन में सेल्स का अमाउंट वी हैव, सेल्स इज 3 लाख, बट बोला इसमें से कैश कॉम्पोनेंट इज 20, cash component is 10, something like this. So in absence of that information, assuming entire sales would be on credit. ठीक है. So पूरे 12 महीने में sales is 3 lakh. A debtors holding period is how much? 3 months. Holding period बोलो या credit period बोलो, that is one and the same. ठीक है. So proportionate to 3 months of sales, of credit sales, is my debtors. Yes or no? Is my value of debtors? So this is credit allowed to debtors, credit period. So this is the amount of my debtors. कितना आया? 75,000. Clear everyone? So if I want to derive a formula for debtors, can I say it is nothing but credit sales into average collection period. ये याद है एवरेज कलेक्शन पीरियड? इट वॉज नथिंग बट योर क्रेडिट पीरियड, ACP, डिवाइडेड बाय 12, 365, 52. एंड आई होप आपने ये फॉर्मूला रेशियोज चैप्टर में भी देखी होगी. रेशियोज में भी बैलेंस शीट बनाने के लिए डेटर्स की वैल्यू चाहिए होती थी. तो आई होप आपने यही फॉर्मूला यूज करी थी. क्रेडिट सेल्स इनटू ACP डिवाइड बाय 12, 365, 52. क्लियर एवरीवन? ACP इज नथिंग बट क्रेडिट पीरियड. क्रेडिट पीरियड का दूसरा नाम है ACP, एवरेज कलेक्शन पीरियड. और डेटर्स होल्डिंग पीरियड भी बोल सकते हो. मींस डेटर्स को आपने कितने टाइम के लिए क्रेडिट दे रखी है, दैट इज डेटर्स होल्डिंग पीरियड. बिकॉज उतने टाइम तक डेटर्स हैज नॉट, he has hold that value with him, so that's why we'll also call as debtors holding period. ठीक है. So can I substitute this formula in our original main format? So debtors is based on credit sales into average collection period. A average collection period I term in short as ACP. ठीक है. Divide by 12, 365, 52. This is for debtors. ठीक है. कैश बैंक बैलेंस की देयर इज नो फॉर्मूला. कैश एंड बैंक बैलेंस आपको ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली दे देंगे. द कंपनी नॉर्मली कीप्स कैश इन हैंड टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000. ठीक है. सो कैश बैंक बैलेंस नो फॉर्मूला. कैश आपको कितना रखना है वही आपकी फॉर्मूला है. Clear everyone? 75,000. So current asset में except for WIP stock,
all the else or all other components are solved. ठीक है. अरे बाप रे, क्रेडिटर्स भी सॉल्व कर दिया, वाह, नाइस. ओके, नाउ नेक्स्ट. ए एनी प्रीपेड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ भी है? नहीं है, सो अदर करंट असेट नील. नाउ लेट्स कम टू current liabilities. A creditors, can I say creditors will be based on credit purchases? जैसे debtors are based on credit sales. Creditors will be based on credit purchases. So working note number 5. Calculation of creditors. ठीक है? First of all, we know they are valued from credit purchases. बोलो. As a manufacturing business organization, what will you purchase from your creditors? Can I say raw material खरीदेंगे? So how much is the raw material in our cost statement? 1,80,000? Yes or no? So 1,80,000 पूरे 12 महीने का क्रेडिट परचेस है. Creditor holding period is 2 months. I am allowing 2 months. Sorry, my supplier is allowing me 2 months credit. Are you following? So proportionate to 2 months of credit purchases is my value of creditors. Okay, so this is credit allowed by supplier. This is credit purchase. कितना है अमाउंट? 30,000. 180 into 2/12. 30,000. ठीक है. So this is the value of my creditors. So बातों बातों में we derived the formula of creditors. It is nothing but credit purchases into average payment period, APP, average payment period. क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर को क्या बोलते हैं? एवरेज पेमेंट पीरियड डिवाइडेड बाय 12, 365, 52. Clear? So let me just substitute the formula in my standard format. Creditors. Credit purchases into average payment period divided by 12, 365, 52. And the resultant answer was how much? 30,000. Okay? Now let's read the question. The wages and overhead. See, अब outstanding expenses. Directly ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, but there is one hint. Wages and overheads are paid on the first of each month for the previous month. It means, can I say पूरा जुलाई महीना लेबर ने काम किया, they will get their salary on 1st of August. Yes or no? So can I say पूरे महीने की salary is outstanding for 1 month and you pay on the next day? Yes or no? So if you prepare July end का balance sheet, you will see outstanding wages because वो August में भरा है. ठीक है? So wages and overheads are outstanding for 1 month. Clear? So this is outstanding period. So working note number कौन सा आया? 6. वर्किंग नोट नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. सी, ये इतने सारे वर्किंग नोट है ना, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बने हैं बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग यू द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला. बट इन योर एग्जामिनेशन आप सीधा फॉर्मूला लेके फॉर्मेट में ही सब्सटीट्यूट कर देना. आर यू फॉलोइंग? नो नीड टू प्रिपेयर ऑल दिस वर्किंग नोट. दिस इज जस्ट प्रिपेयर्ड वन टाइम सो दैट you understand the logic behind the formula. Clear? So expenses में there are 2, wages and one is overheads. पूरे 12 महीने का wages कितना है? 30,000 है, I guess. And पूरे 12 महीने का overheads is 60,000, I guess. So proportionate to 1 month of total yearly wages is my outstanding wages. बोलो कितना आया? Outstanding को technical term is called lag. Lag means
लैग पीरियड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लैग पीरियड और आउटस्टैंडिंग पीरियड. माय वेजेस आर 30,000 एंड ओवरहेड्स आर 60,000 ना. सी द कॉस्ट शीट ना, 30 and 60 है, तो इतना टाइम क्यों लग रहा है. सो 30,000 इंटू 1/12, 2,500. क्लियर एवरीवन. एंड ओवरहेड्स में 60,000 इंटू 1/12, 5,000 is my outstanding wages, is my outstanding overheads. Clear. ये तो फॉर्मूला बनानी हो, कहना ऐसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज नथिंग बट उस एक्सपेंस का टोटल ईयरली अमाउंट लेने का इनटू लैग पीरियड डिवाइड बाय 12, 365, 12. यस और नो. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. सो वी टेक एक्सपेंसेस का टोटल मल्टीप्लाई बाय आउटस्टैंडिंग पीरियड बोलो या लैग पीरियड बोलो, डिवाइड बाय 12, 365, 52. क्लियर. सो 2,500 प्लस 5,000 आ रहा था. Yes or no? So 7,500 in total is my outstanding expense. Hey, any bank OD given in the question? There is no such bank OD. कंपनी ने ओवरड्राफ्ट लिया है ऐसा कुछ बोला नहीं है, सो वी विल इग्नोर दैट. ठीक है. सो बैंक ओडी इग्नोर. सो आइडियली वी फाउंड ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ करंट लायबिलिटीज. करंट असेट में भी सारे मिल गए एक्सेप्ट वन, वर्किंग कैपिटल. एंड वर्किंग कैपिटल को समझना बहुत जरूरी है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट स्टॉक ऑफ वर्किंग कैपिटल सॉरी WIP, वर्क इन प्रोग्रेस. फर्स्ट ऑफ ऑल let's this is working note number 7 now. Working note number 7, calculation of work WIP stock. ठीक है. जैसे रॉ मटेरियल इज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल कंजम्पशन, FG is based on goods sold, वैसे वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोग्रेस is based on cost of production. Are you following everyone? So first of all, WIP is based on cost of process, cost of production. ठीक है. ए तो कहना इसे currently my cost of production is how much? Can you tell me how much is my cost of production पूरे 12 महीने का? In entire 12 months, my cost of production is 2,70,000. Correct? Proportionate to 1 month is my process. Are you following? 1 unit remains in WIP process for 1 month. Can I say? So WIP process में वो 1 महीना रहते हैं. So proportionate to 1 month is my WIP stock. Same analogy like we used for raw materials, like we used for debtors, like we used for finished goods, like we used for creditors. ठीक है. So can you tell me a figure कितना आ रहा है? 270 into 1/12, 22,500. Okay. ओके. क्लियर क्लियर. बट डोंट राइट. हाँ, ये सही आंसर नहीं है. डोंट राइट. ओके. ये मान लो सी यहाँ पे WIP प्रोसेस पीरियड इज 1 मंथ. ओके. ए मान लो WIP प्रोसेस पीरियड फॉर द टाइम बीइंग, लेट्स अज्यूम 1 मंथ में 22,500 इज करेक्ट. बट मान लो ये 1 मंथ नहीं, ये 3 मंथ्स होता तो कितना आता? ये 3 मंथ्स होता तो कितना आता? 67,500 आता. ठीक है. एंड कहना है से मेरे FG स्टॉक की वैल्यू भी 67,500 है. करेक्ट. अगर 3 मंथ होता तो. ठीक है. सो कहना है से FG और WIP में देयर इज नो डिफरेंस. यस और नो? व्हाई देयर इज नो डिफरेंस? बिकॉज WIP इज ऑल्सो 3 मंथ्स, FG इज ऑल्सो 3 मंथ्स. इसलिए वो देयर इज नो डिफरेंस की देयर शुड बी अनदर रीजन. सी आप मेरा क्वेश्चन समझे. मैंने WIP को 3 मंथ्स करवा दिया, सो दिस कम्स टू 67,500. ओ सर FG स्टॉक भी 67,500 है, दोनों सेम आया. मैजिक.
इज दिस बिकॉज हमने ये WIP को 3 मंथ्स लिया इसलिए सेम आया? हाँ, खुशी ने सही पकड़ा है. कैच इज राइट. COGS इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इट मीन्स कैन आई से WIP स्टॉक हो या FG स्टॉक हो, both are valued on the same amount. 2,70,000. FG स्टॉक देखो हमने वैल्यू किया था COGS पे, बट दैट वाज आल्सो 2,70,000. आर यू फॉलोइंग? सो आइडियली कैन आई से दिस चैप्टर इज ट्राइंग टू से कि WIP और FG में कोई फर्क नहीं है. व्हाट एडमिशन व्हाट? ये लुक एट द कॉस्ट शीट ना. FG stock working note number 3, we valued FG stock on 270. That was COGS. 270 COGS. WIP we value on cost of production. Again, that is 270. So can I say this chapter is trying to say FG में कोई फर्क नहीं है? Yes or no? इससे तो यही मतलब निकल रहा है ना, because the base is same for both. Are you following everyone? एंड अगर दोनों का होल्डिंग पीरियड भी सेम है तो वैल्यू भी सेम आ रही है. 67,500 67,500. सो कैन आई से ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सर इस चैप्टर में तो WIP और FG में कोई डिफरेंस ही नहीं रहा. बट टेक्निकली दोनों में डिफरेंस तो होना चाहिए बिकॉज FG इज कंप्लीटेड गुड्स. लेट्स से वी आर एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एक्सपेंस गिवन इन द क्वेश्चन, फिर भी COP और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो सेम ही रहेंगे ना भाई. व्हाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग? COGS कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद एडमिन एंड सेलिंग. सो FG विल बी बेस्ड ऑन COGS, WIP विल बी बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कहीं पे भी एडमिन सेलिंग या ऐड किया है क्या? Yes, Arun, you have rightly understood, you have rightly caught the thing, but some other students, most of the students will not understand, so I need to explain them. Okay, so WIP and FG mein, if the base is same, here it is valued on 270, here it is valued on 270. हाँ, this is cost of production, but can I say वही मेरा COGS है? So ideally, technically, from the perspective of valuation, WIP and FG में कोई फर्क नहीं रहा इस चैप्टर में, if the assumption number 1 holds true. But sir, डिफरेंस तो होना चाहिए बिकॉज WIP FG का मतलब ही अलग है. Let's say I am into the business of manufacturing of shirt. तो कहना है इसे complete piece of shirt is FG. बट मान लो उसमें कुछ बटन्स लगाने बाकी रह गए, कॉलर लगाना बाकी रह गया, स्लीव्स बाकी रह गया, दैट इज WIP, अनफिनिश्ड गुड्स. Yes or no? So how can both have same value? A complete shirt with incomplete shirt, दोनों की वैल्यू कैसे सेम हो सकती है? Are you following? So फर्क कहाँ पड़ेगा? फर्क कहना इसे परसेंटेज कंप्लीशन में पड़ेगा. कहाँ पड़ेगा? परसेंटेज कंप्लीशन. WIP will not be 100% complete. A shirt is our goods, final product. But shirt में पॉकेट रह गया है, बटन स्टिच करने रह गए, तो कैन आई से इट इज नॉट 100% कंप्लीट. बट FG ऑन द अदर हैंड इज 100% कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट्स. तब जाके वो फिनिश गुड्स बना है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो द डिफरेंस लाइज ओवर हियर. आर यू फॉलोइंग? तो कहना है से डिफरेंस की इफेक्ट हमें फॉर्मूला में देनी पड़ेगी. आर यू अंडरस्टैंडिंग everyone the concept of percentage completion? Because W is unfinished product, उसमें अभी बटन स्टिच करने बाकी है, कॉलर लगाना बाकी है, बट फिनिश गुड्स इज अ कंप्लीट पीस ऑफ शर्ट. ये मार्किंग के साथ इट इज कंप्लीट. आर यू फॉलोइंग? साइज जो मार्किंग आती है ना पीछे साइज की, वो सब टैग लगाने के बाद इट इज कंप्लीट. हाँ, कैन वी अज्यूम 50% completion? Now the twist, now the catch lies over there. ठीक है? So now first of all we know that WIP is based on cost of production. That is correct. A cost of production 2,70,000.
That is correct. 2,70,000 is my cost of production. We will value W. That is correct. ये 270 कैसे आया होगा? Can I say प्रोसेस में there would be some raw material. ये प्रोसेस में हमने रॉ मटेरियल डाला होगा. उस प्रोसेस में कुछ लेबर काम कर रहे होंगे एंड कुछ ओवरहेड्स होंगे. यस और नो? सो टोटल WIP बेस्ड ऑन cost of production 270 is nothing but combination of raw material that is entered into the process. कितना है? कितना था? How much is raw material? 60,000 into कितना था? 3 ना, 180 plus 30. Don't write, first just listen. Plus 60 करके 270 आया है. Yes or no? Everyone understanding till here? ये 270 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आया है? एडिंग रॉ मटेरियल कंजम्पशन, एडिंग लेबर, एडिंग ओवरहेड्स. ठीक है. एंड वही तीन चीजें प्रोसेस में भी काम कर रही होगी ना. रॉ मटेरियल प्रोसेस में डाला होगा, वर्कर्स उस पर कुछ काम कर रहे होंगे एंड प्लस सम अदर एक्सपेंसेस में. ठीक है. सो जैसे फॉर्मूला ऑफ रॉ मटेरियल वाज रॉ मटेरियल कंजम्पशन इनटू होल्डिंग पीरियड डिवाइड बाय 12, वैसे यहाँ पे WIP होल्डिंग पीरियड आएगा. आर यू फॉलोइंग? डिवाइड बाय 12, 365 52 करना पड़ेगा. यस और नो? इनटू WIP होल्डिंग पीरियड डिवाइड बाय 12, 365 52. एंड थर्ड केस में भी इनटू WIP होल्डिंग पीरियड डिवाइड बाय 12, 365 52. करेक्ट. सो तब जाके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 270 इंटू 1/12 आपका जो आ रहा था ना 22,500 कम्स. ठीक है. सो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ these three line items. But now the catch comes. We know that FG, focus on this, FG, focus on this, FG. Can I say FG is 100% complete? So isko we will multiply it with 100%. Are you following? And let's say WIP is only 80% work done. तो कहना से हमें यहाँ पे 80% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. Everyone, are you following? To all the three line items, we will multiply it with 80%. Why we call 80%? Because it is unfinished to the extent of 20%. Are you following? FG 100% complete hai. It is unfinished to the extent of 0%. So that's why we multiplied FG with 100%. But WIP is not 100% complete. So we have to multiply it with percentage completion. Are you following everyone? अच्छा, ये 100% मैंने FG में क्यों नहीं लिखा? बिकॉज ये जो फॉर्मूला से जो आंसर आएगा ना, मल्टीप्लाई बाय 100% करो फिर भी द अमाउंट विल रिमेन सेम. ये सर नो, ये 67,500 का 67,500 ही रहेगा. दैट्स व्हाई वी हैव नॉट अलग से रिटर्न इनटू 100%. आर यू फॉलोइंग? बट समझना तो वैसे ही है कि FG इज नथिंग बट COGS इंटू FG होल्डिंग पीरियड डिवाइड बाय 12 इंटू 100%. बट आंसर ढूंढने के लिए 100% मल्टीप्लाई करना इज नॉट नेसेसरी. दैट्स व्हाई वी हैव नॉट मेंशन्ड दैट. आर यू फॉलोइंग? सो फॉर WIP, कैन आई से WIP में, in other words, there will be three components. WIP में हमने रॉ मटेरियल प्रोसेस में डाला होगा, बट दैट इज ओनली 80% थ्रोन इन द प्रोसेस. ये 80% तो एग्जाम्पल दिया इन प्रेजेंट केस. स्टैंडर्ड अजम्पशन आई विल टेल यू. ठीक है. दिस इज इन प्रेजेंट एग्जाम्पल. लेबर 80% मीन्स लेबर ने अभी तक 80 प्रोसेस में, तब जाके गुड्स इज जस्ट 80% कंप्लीट. आर यू फॉलोइंग? एंड ओवरहेड्स भी 80% इनकर हुआ है. ठीक है. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर हमें एग्जाम में ये परसेंटेज कंप्लीशन कितना लेना है. What percentage completion should be taken? So question will specify that कि raw material is entirely thrown into the process. It means जितने raw material लगते हैं FG बनाने के लिए वो सारे मशीन में डाल दिए. तो कहना है FG ने रॉ मटेरियल ने तो अपना काम कर दिया,
वो तो 100% आ जाएगा. Yes or no? Are you following everyone? So in that case 100. बट क्वेश्चन से नहीं, हमने 100% रॉ मटेरियल नहीं डाले हैं अभी, सिर्फ 90% डाला है, तो यू मल्टीप्लाइड विथ 90%. ठीक है. फिर लेबर के लिए भी, लेबर ने सिर्फ 40% काम किया है, तो यू टेक जस्ट 40%. एक्सपेंस इनकर आर ओनली 20% इन WIP, तो यू टेक 20%. सो आइडियली परसेंटेज कंप्लीशन डिटेल्स you will receive, you will get in the question. But if question is silent about percentage completion, then standard assumption is 100 50 50. Are you following? You take this assumption 100 50 50 means raw material प्रोसेस में 100% डाल दिए हैं, बट लेबर और ओवरहेड्स ने अपना 50% ही काम किया है. क्लियर एवरीवन? 50% yet to be done. Are you following? So for percentage completion, can I say the standard assumption is 100 50 50? This standard assumption will be used only when question is silent. If question specifies, then you take that specific information. Clear everyone? So this is how you calculate WIP. तो कैन आई से फॉर्मूला क्या बनी? रॉ मटेरियल. सी WIP में रॉ मटेरियल भी होगा, लेबर भी काम कर रहे होंगे, ओवरहेड्स भी होंगे. ठीक है. सो फॉर्मूला इज रॉ मटेरियल कंजम्पशन into WIP holding period divided by 12 365 52 into the percentage completion. Are you following? अगर ये परसेंटेज कंप्लीशन करना भूल गए, इट मींस यू आर इक्वेटिंग WIP विद FG. आर यू फॉलोइंग? दोनों के बीच डिफरेंस यही है कि WIP इज नॉट 100% कंप्लीट, इट इज अनफिनिश्ड गुड्स. वैसे लेबर के लिए वी विल कैलकुलेट लेबर इनटू WIP होल्डिंग पीरियड डिवाइड बाय 12 365 52. ठीक है. एंड वैसे overheads into WIP holding period divided by 12 365 52 into percentage completion. So ये जो भी वैल्यू आ रही है ना, कितनी आ रही है अब बताओ? रॉ मटेरियल इज 1,80,000. WIP process is 1 month. Divide by 12 into 100%. See, in this question is silent about percentage completion, but यहाँ hint दी है, raw material being fed into the pipeline immediately. Immediately means raw material सारे के सारे हमने तुरंत ही मशीन में डाल दिए. So 15,000 is raw material. 180 into 1 by 12, 15,000. ठीक है. So this means WIP स्टॉक में रॉ मटेरियल का अमाउंट इज 15,000. आर यू फॉलोइंग? सी WIP स्टॉक एज सच कोई अलग से नहीं है, इट इज कंपोनेंट्स ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स. सो WIP स्टॉक में माय रॉ मटेरियल की वैल्यू कितनी है? 15,000. ठीक है. वैसे लेबर इज आई गेस 30,000 इंटू 1 by 12 इंटू 50%. कितना आया? सो लेबर कॉस्ट इज 30,000. WIP होल्डिंग पीरियड लेना है यहाँ पे, वेजेस आउटस्टैंडिंग पीरियड नहीं लेना है. अगेन ऊपर भी रॉ मटेरियल कंजम्पशन इनटू WIP होल्डिंग पीरियड, नॉट द रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड. इफ यू गलती से टेक रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, तो वो स्टॉक ऑफ RM हो जाएगा. हमें RM की वैल्यू WIP में कितनी है वो ढूंढनी है. आर यू फॉलोइंग? WIP स्टॉक में व्हाट इज द अमाउंट ऑफ RM दैट वी नीड टू फाइंड. क्लियर? सो ये 1250 आया. एंड ओवरहेड्स इज कमिंग टू हाउ मच? So it means labor value in WIP stock is 1250 and overheads value in WIP stock is 60,000. So इसका double means 2,500. So my overall WIP stock is 15,000 plus 2,500 plus 1250. So 17, 18,750 is my overall WIP stock. Understood everyone? हाँ, 18,750 का ब्रेकअप क्या है? तो 18,750 में से 15,000 तो रॉ मटेरियल का है. क्लियर? लेबर का 1250 एंड 2,500 फॉर अदर ओवरहेड्स.
So now can I say I have found all the components of current assets and current liabilities. So now you just simply add 30,000 of RM stock plus 18,750 of WIP plus FG 67,500. Cash bank balance is 20 and I will get gross working capital of how much rupees? कितना आया? 211,250. Okay, this is gross working capital. इसमें से we will subtract current liabilities in the form of creditors. 30,000 is the value of creditors. उसमें से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 7,500 माइनस करेंगे तो आई विल गेट एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटीज. कितना आया? 211,250 minus 37,500. So I get excess of current asset over current liability. 173,750. Any safety margin information given in the question कि keep safety margin of 10%, 15% ऐसा कुछ भी बोला है? So in absence of that information, safety margin nil. मान लो ऐसा बोला होता safety margin is 10% at 10%. So you calculate 10% on this amount, 173,750 का 10%. So उतना हम cushion add करते हैं. But no information in this case, so we will ignore, and our net working capital required will be 173,750. Clear everyone? Do you want to take screenshot of this calculation कि आपने लिखा हुआ ही है? Screenshot. So I guess formulas are written, na? Okay, just take the screenshot. Shall I scroll? Scrolling in 5, 4, 3, 2, 1. So now let's come to current liabilities. 5, 4, 3, 2, 1. Then we come to cost statement. I guess this is ready, na? Cost statement सबका बन गया है ना? Still जिसका नहीं बना है, take screenshot fast. Just quickly take the screenshot of these working notes. If you want to take, इसको समझ ही गया है, इसको नहीं लेना है, नहीं ले. 5, 4, 3, 2, 1. Moving to working note 3. Five, 4, 3, 2, 1. Working note 4. Five, 4, 3, 2, 1. Working note 5. Calculation of creditors. 5, 4, 3,
1 6 6 पे फर्स्ट फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस टिल ईयर, सॉरी टिल ईयर, देन ओवरहेड्स. नो नीड टू टेक वर्किंग नोट फॉर WIP बिकॉज उसको ऊपर ही मैंने समझा दिया, मेन फॉर्मेट में ही समझा दिया है. In short, you have to multiply WIP stock with percentage completion that is given in the question. If it is not given in the question, standard assumption 150-50. Clear everyone? So comprehensively we covered one illustration that explained how to solve, how to estimate the working capital required. So can I say जो 173,750 हमारा जो आंसर आ रहा है, that is our working capital need for the entire next year. Yes or no? एक साल का कैलकुलेट किया ना. So but in practical world, if we present this to financial institution, bank will not fund us the entire amount. वो बोलेगा इसका proportionate I can max fund for 3 months. So he will do proportionate to 3 months. ठीक है. अगर bank is ready to finance for 6 months, proportionate to 6 months. Clear? Now very important. हमने अभी जो भी कैलकुलेशंस किए हैं ना, जो भी हमारा जो आंसर आया, जो भी कॉस्ट स्टेटमेंट बनाया, that was following the approach called as total basis. To estimate working capital requirement, there are two methods. One is total basis approach, one is cash cost basis approach. ठीक है. Now, what is the difference between total basis and cash cost basis? Okay, let's understand that. There is one more method called cash cost basis. हमने अभी जो कैलकुलेशन किया टोटल बेसिस पे किया. ठीक है. नाउ फॉरगेट क्वेश्चन 1, जस्ट विजुअलाइज की ये हमारी कॉस्ट शीट है. क्वेश्चन 1 की है, 2 की है, ये भूल जाओ. ये हमारी कॉस्ट शीट है. ठीक है. अ स्मॉल ट्विस्ट. ये जो 1 रुपीज है ना, 1 ही है, सॉरी 1 ही है, बट ये 1 के नाउ दो कंपोनेंट्स. वन, दिस 1 इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन एज वेल. ठीक है. बिकॉज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी वगैरह इस फैक्ट्री ओवरहेड्स में इंक्लूड होता है. सो लेट्स से 0.5 पर यूनिट फ्रॉम दिस 1 इज डेप्रिसिएशन एंड बाकी के अदर कैश ओवरहेड्स है. ठीक है. अदर देन डेप्रिसिएशन इज 0.5. ये तो कहना इसे फैक्ट्री ओवरहेड्स में डेप्रिसिएशन इज 30,000 एंड कैश इज 30,000. ये सर तब जाके दोनों मिला के 60,000 हुए. टोटल फैक्ट्री ओवरहेड 60,000 कम्स. ठीक है. नाउ कैश कॉस्ट बेसिस सेज कि यू हैव टू इंक्लूड ओनली द फर्स्ट थिंग इज कॉस्ट. सारे कॉस्ट ही इंक्लूड करने हैं. इट मीन्स कहना इसे हमें प्रॉफिट को भी इग्नोर करना है. आर यू फॉलोइंग? Because profit is not your cost, it is something over and above the cost. So cash cost basis says don't include profit, include only the cost. Okay, we told okay, ठीक है, we will only accept the cost. सारे कॉस्ट ले ले. तो अगेन कैश कॉस्ट बेसिस से नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, ओनली those cost which can be paid in cash. Are you following? It means non cash expense आपको नहीं लेना. Are you following? नाम में ही है कैश कॉस्ट बेसिस. फर्स्ट टेक ओनली द कैश, सॉरी कॉस्ट. सो इग्नोर द प्रॉफिट, बट नॉट ऑल द कॉस्ट, ओनली दोस कॉस्ट विच कैन बी पेड इन कैश, नॉन कैश टू बी इग्नोर. ये तो कहना इससे यहाँ पे ए विल रॉ मटेरियल बी पेड इन कैश. यस, रॉ मटेरियल का हम कैश में आज नहीं तो कल कैश में ही भरेंगे. वेजेस विल बी पेड इन कैश, करेक्ट. But will depreciation be paid? Is depreciation a cash expense? No. So we ignore depreciation in factory overheads if we follow cash cost basis. Total basis में सब में टिकाएगा. Depreciation भी लो. Are you following? हाँ, other cash overheads obviously we will pay in cash. ठीक है.
So we will get COGS, cost of production. But can I say cash cost basis में COGS and cost of production will be less than total basis? ऐसा no, because depreciation को निकाल दिया है. So it will be less than total basis वाला cost of production. हाँ, admin and selling and distribution. आज नहीं तो कल they will be paid in cash. Clear? So that also we need to ignore. Consider cost of sales. ठीक है? अच्छा, in total basis we include profit as well, but in cash cost basis we will not include profit. तो कह रहा है प्रॉफिट नहीं इंक्लूड होगा तो सेल्स भी नहीं इंक्लूड होगा. यस और नो? तो सर फर्क कहां पड़ेगा? कैन आई से इफ वी वैल्यू डेटर्स यूजिंग टोटल बेसिस, फिलहाल 3 लाख पे हमने वैल्यू किया था डेटर्स को, बट इफ वी वैल्यू डेटर्स यूजिंग कैश कॉस्ट बेसिस, कैन आई से वी हैव टू वैल्यू डेटर्स ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स? यस और नो? Everyone understanding? So in that case, if you follow cash cost basis, can I say मेरी debtors की formula will be cost of sales into, ऐसे लिख रहा हूं, थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, आप समझ जाना. बाकी everything will remain same. Average collection period divide by 12, 365, 52. Clear? So debtors, you have to read the question very carefully. Are they asking you to follow cash cost basis or total basis? So read the question carefully. मान लो कुछ भी ना दिया हो तो question is silent. So first, see, the approach should be first check directly. Question ने क्या बोला है? Use cash cost तो cash cost ही लेने का. यूज टोटल तो टोटल ही लेने का. बट इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द मेथड्स, देन क्वेश्चन ने कहीं ना कहीं कुछ इनडायरेक्ट हिंट दी होगी. सी हिंट, कैश कॉस्ट और टोटल बेसिस का आप लॉजिक समझते हैं. क्यों ऐसा? डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लेने का और प्रॉफिट क्यों नहीं लेने का, उसका लॉजिक समझते हैं. नहीं लेने का वो मैंने आपको बता दिया कि इग्नोर प्रॉफिट, इग्नोर नॉन कैश एक्सपेंस. बट क्यों नहीं लेने का? लेट्स अंडरस्टैंड दैट नाउ. लेट्स से you are estimating the working capital needs so that you can take finance from the bank. ठीक है? So that bank आपको finance करे working capital का. ठीक है? Tell me, will bank first of all finance that cost which is not actually paid? क्या आपके जेब से जो कॉस्ट गया ही नहीं है, जो जेब से इनकर ही नहीं हुआ है, उसकी फाइनेंसिंग बैंक? Tell me, will bank finance that to you all? No, absolutely no. Correct? So that's why first of all non-cash expenses are ignored. Clear? Because जेब से पैसा ही नहीं गया तो फाइनेंस किस चीज का मांग रहे? ओके, नेक्स्ट कम टू प्रॉफिट. इज प्रॉफिट योर कॉस्ट की समथिंग ओवर एंड अबव योर कॉस्ट? ये भी कहना है प्रॉफिट आपके जेब से इनकर नहीं हुआ है, जेब से तो कॉस्ट ही इनकर हुआ है. आर यू फॉलोइंग? सो अगेन बैंक विल से प्रॉफिट तो इट इज समथिंग ओवर एंड अबव कॉस्ट दैट यू विल अर्न. तो आपके अर्निंग्स को भी हम फाइनेंस करके दें, ये तो रैशनल चीज नहीं है. ये आपकी कमाई है और वो भी फाइनेंसिंग आप मुझसे मांग रहे हो, कमाई की फाइनेंसिंग मुझसे मांग रहे हो. दैट इज नॉट रैशनल. सो अगेन आपके जेब से जो गया है, जेब से द अमाउंट ब्लॉक फ्रॉम योर पॉकेट इज फाइनेंस्ड बाय बैंक. Are you following? So cash cost basis is ideally more logical and more practical and more used in practical world. Are you following? Not more, but used in practical world. Following? So first of all, bank never funds for profit. That is your earnings over and above what you have actually paid. So profits are never financed. Second, जो कॉस्ट आपके जेब से ही नहीं गया है, नहीं जाने वाला है फ्यूचर में, how can we finance that? Are you following? Let's assume, देख ये ऐसा है, मान लो आपको घर गिफ्ट में मिलने वाला है. प्लीज रिपीट इन इंग्लिश एज वेल. आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश. हाँ, ओके. सी, कैश कॉस्ट बेसिस इज ट्राइंग टू से, see, assume, just understand the story. Let's say I estimated my working capital required. ठीक है?
So I got amount of 15 lakh. Now what will I do? I will go to the bank. Hey, bank, I will knock the doors of the bank. Bank, I want 15 lakh of working capital. Bank says, wait, sit down. Show me your working capital calculation. How did you calculate? So I showed him the cost statement. I showed him the format. So he said, oh, in cost statement you have included depreciation. Is depreciation paid from your pocket? I will say, no, this is not paid from my pocket. So bank will say, how can I finance that if you have not paid? Are you following? So cash cost says, ignore non-cash expense. Are you following now? This is the best English I can speak. Huh? Next, bank also checked. Oh, in cost statement, you have include profit as well. Cash cost will be robust. Yes, correct, accurate. Yes, correct, both Anil. And bank will also check your cost statement. He will see, oh, you have included profit as well. Means you have valued debtors on sales. So sales include profit as well. So you want financing of profit as well. Financing of profit means the thing that you are actually earning. So how can I finance your earnings? I should only finance the amount that is blocked from your pocket. Are you following? That will be paid from your pocket. So that's why we ignore profit as well. And that's why cash cost basis is practically used. It is more logical, more practical. Understood now? But we are in academics, we have to follow what question says. If question says follow cash cost, you solve by cash cost basis. I told you have to ignore profit. Profit means your debtors will be valued on cost of sales. So real amount blocked in debtors is not the sales amount, is actually the cost of sales. Clear? And you will ignore non-cash expense. Understood, everyone? Any doubts? Any queries in total basis, in cash cost basis? समझ गए? Okay. So you have to catch such hints from the question as well. Are they using some terms like the company is going to the bank, company is presenting its working capital calculation to the banks for financing its needs? So this is an indirect hint that you have to catch, that they are trying to say use cash cost basis. इसमें they will not specifically say. They have directly give you the hint. You are going to the bank for financing. The bank will obviously not finance for profit and non-cash expense. So they are indirectly saying follow cash cost basis in this problem. Clear? So catch that hints. Acha, even the hints are not given. So can I say now you are free to use whichever method you want to use. Just write a note at the end. Clear? Everyone? Okay? So first, follow the specifics given in the question. Second, try to catch some indirect or direct hints given in the question. If still hints are missing, you are free to use whichever method you want to use. Just write a note about it in the last. Okay? Okay. So can we move to A? Why is our answer not matching? Can we check? क्या हमने कैलकुलेशन में गलती करी है कहीं पे? So 30,000 is raw material का stock. Are we getting 30,000? Yes, we are getting 30,000. 18,750 WIP. We are also getting total of 18,750 WIP. Correct. 67,500 is FG. Correct. Here now, can you see the twist? Debtors is 67,500. How much is our debtors? 75,000. Can I say they have followed cash cost basis? Means they have valued debtors on cost of sales. Are you following? See, refer working note लिखा ना, debtors refer working note 4. So refer working note 4. Debtors 270. We have valued on 3 lakhs. They have valued on 270. Are you following? So they have followed cash cost basis. Clear? Everyone? So that's why the difference is coming. बाकी सब same है. Understood? So यहाँ पे मैं heading दे दूँ.
डायरेक्ट यहाँ पे पता चल जाए, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल यूजिंग टोटल बेसिस, ठीक है, बिकॉज देर वॉज नो डायरेक्ट हिंट एज वेल गिवन इन दिस इलस्ट्रेशन कि कंपनी इज गोइंग फॉर फाइनेंसिंग, ऐसा कुछ बोला। दे हैव जस्ट आस्क्ड कि हाउ मच वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल नीडेड, ठीक है, एंड देयर इज नो स्पेसिफिक्स एज वेल कि यूज कैश कॉस्ट टोटल बेस, क्लियर। ये मैंने वही बताया कि लास्ट सी फॉर द स्पेसिफिक्स, इफ स्पेसिफिक्स आर नॉट गिवन कैच द हिंट्स, इफ हिंट्स आर नॉट गिवन यू आर फ्री टू यूज एनी मेथड, जस्ट राइट अ नोट एट द एंड। Are you following? Acha, sir, about the assumption. A assumption is a default assumption of this chapter that all activities accrue evenly throughout the year. So no need to write that assumption. जैसे accounting में there are some standard assumptions, yes or no? Permanent assumptions, accounting principle में थे ना, going concern. So we don't write note about that going concern in accounting notes. That is by default assumed. Going concern, accrual and consistency, these are the standard basic assumption of accounting principle. तो इसके बारे में स्पेसिफिक अकाउंटिंग नोट्स में नहीं लिखते थे हम। Why? Because it is default, by default understood, assumed. Clear everyone? So कैश कॉस्ट बेसिस को समझ, कैश कॉस्ट बेसिस को समझने के लिए the thing is, see, understand in a very layman rational terms. Let's say you are buying a home from your own funds, but from your own funds means you are paying from your own pocket, ठीक है, but सारे ओन फंड्स मतलब जितने जितनी वैल्यू का घर है, द अमाउंट ऑफ हाउस, द वैल्यू ऑफ हाउस इज 1 CR, लेट्स से 1 CR you are buying. Okay, let me put this way. Let's say this is you, ठीक है, ये आप हो, and there is a third party from whom you are buying the house, ठीक है. Let's say the value of house is 1 CR. Now you want to buy the house from third party, ठीक है. So can I say you have to pay 1 CR to third party? Oh, I don't have funds. Can I say you will go to bank? बैंक तैयार है आपको फाइनेंस करने के लिए बिकॉज यू आर एक्चुअली पेइंग टू थर्ड पार्टी. ए बट लेट्स से यू आर गेटिंग गिफ्ट ऑफ 1 CR इन द फॉर्म ऑफ हाउस फ्रॉम योर मदर. तो कैन यू आस्क द बैंक, अरे मैं गिफ्ट में ले रहा हूं फ्रॉम माई ब्रदर 1 CR, मुझे फाइनेंस करो. विल बैंक फाइनेंस दैट? टेल मी. यू आर गेटिंग इन ए गिफ्ट, यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग. Are you following? So how can bank finance something that you have not paid? Clear? Cash cost basis और total basis में. So cash cost basis is saying कि भाई गिफ्ट में मिला हुआ घर आपने तो पैसा दिया ही नहीं है. How can I finance that? Are you following? So this is something like that. Clear now? Cash cost total basis. I want to conclude this now. Huh? Sir, in cash basis, also WIP not given. The same completion percentage taken as total basis. मैंने total basis cash cost basis में percentage completion में कोई change नहीं करवाया. So percentage completion will remain same. There I haven't changed. हाँ, फर्क इतना है कि overheads में the overheads that you include over here in my main statement कहाँ गया भाई? Here. See, I have not changed this percentage completion. Huh? Just the difference will be here now overheads will be excluding depreciation wala amount. Are you following everyone? So if we follow cash cost basis, so you ignore the depreciation in overheads. Amount other that you have to take. Percentage completion will remain same. Clear? उसमें कोई change नहीं है. Okay, so now we still have 15 minutes. Let's try and understand what is working capital operating cycle. So estimation of working capital is done. ठीक है? Estimation of working capital is done comprehensively with the format, what we say, cost statement with the formulas,
what is total basis, what is cash cost basis. In our illustration one today, the standard assumptions were holding true. In our next session, we will try to solve one question where standard assumption number one, all activities accrue evenly throughout the year, does not hold true. ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंट आएगा, उस केस में कैसे एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल करना है, दैट वी विल लर्न. ठीक है, बट फिलहाल फॉर नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल. ठीक है, वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल. द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल इज it is a process of converting cash back into cash. ठीक है, it is a process of converting cash back into cash. है सर, ये कैश की फैक्ट्री चालू करनी है, यहाँ पे क्या करना है? और सर ये आपने कैश 2 बार यूज करे, दोनों बार अलग अलग कलर से लिखा है, तो क्यों ऐसा अलग अलग कलर से भी लिखा? Can you think what I would be trying to say over here? It is a process of converting cash back into cash. Means, are we starting some factory of cash? Yes, inflow and outflow, correct. One cash represents your outflow, one cash represents your inflow with profit. Okay? So this cash that I am representing is cash that you pay to your supplier to buy raw materials. Are you following? To buy raw materials. And the other cash that I am representing is the cash that you receive from your debtors after sales. Are you following? So process starts right from acquiring the raw material. Are you following? Raw materials खरीदने से, acquisition से process start होती है. Then I enter this raw material into WIP. Clear? WIP से कन्वर्ट होके ये FG बनेगा. ये FG से सेल्स में जाएगा. सेल्स मीन्स डेटर्स को जाएगा. Are you following? Debtors will pay the amount of cash. Means debtors will pay cash to us for the value of sales. And ये cash से again I will buy raw material. I will enter the raw material into process. FG में जाएगा, FG से सेल्स में जाएगा, सेल्स का पैसा मिलेगा, अगेन आई विल बाय रॉ मटेरियल. एंड कैन आई से दिस साइकिल गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन जब तक है जान. मीन्स टिल द इंफिनिटी लाइफ, टिल योर बिजनेस इज इनटू एग्जिस्टेंस. हम जब भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, लाइफ टाइम तक, सालों साल तक, पीढ़ियों तक, लेगेसी तक, my business will go on. This is what we assume. That is assumption of going concern. We do not assume कि आज business भी, I am starting business today and I will end within the end of 3 years. No, we do not assume such case while we start a new business. Are you following? So this cycle will go on and on and on and on. Can I say so? It is nothing but converting the cash that you paid for raw material back again into cash. Are you following? From debtors. This entire process, this entire cycle is called as working capital operating cycle, or you just call it as operating cycle. Are you following? Or you just call it as cash cycle. Clear? Process of converting cash back into cash. This cycle is called as operating cycle or working cycle or cash cycle. Or if any of your fathers, if you have your own business, and if sometimes, I don't know, maybe or maybe not, if you hear the conversations that your father does with his business customers, with his suppliers, then he would have frequently used the word called as rolling. पैसा rolling में अटका पड़ा है.
ए रोलिंग मीन्स ही इज ट्राइंग टू से कि पैसा इस साइकिल में कहीं अटका पड़ा है. आर यू फॉलोइंग? द कैश इज समवेयर ब्लॉक्ड either in raw material WIPFG somewhere here. This is what he's trying to say. So I have heard my father saying this word frequently. ठीक है? If he wants to recover some payment from his customer, he would call to his customer and customer का जवाब होता था कि सर 10 दिन रुक जाओ ना, पैसा रोलिंग में अटका पड़ा है. रोलिंग मीन्स ही इज ट्राइंग टू से ये साइकिल में कहीं इट इज स्टक. Following everyone. So in layman terms, we call it cycle as rolling. But no need to know this, just a general knowledge. Clear? Okay. Now, can I say to complete this entire process, it will take some time? ए सर ये पूरी साइकिल कंप्लीट होने में रातों रात फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स मिनट्स में तो नहीं होगा. इट विल टेक सम टाइम. सो टाइम टेकन टू complete the entire process of cash conversion. The time taken to complete the entire process of cash conversion is known as, क्या बोलेंगे इसको, ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल. ठीक है? टाइम मीन्स ड्यूरेशन. हाउ मच टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट द साइकिल. क्या ये पूरे साइकिल कंप्लीट करने में 30 दिन लगता है? तो 30 दिन इज कॉल्ड एज ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल. आर यू फॉलोइंग स्टूडेंट्स? नाउ माय क्वेश्चन टू यू, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव करेक्ट आंसर. लेट्स से इस साइकिल कंप्लीट करने में, पूरे एक साइकिल कंप्लीट करने में 30 डेज लगता है. तो ऐसे साइकिल्स पूरे साल में कितनी बार चलेगी? एक साइकिल को कंप्लीट होने में, टू कंप्लीट वन साइकिल इट टेक्स 30 days. So in entire year, how much cycles would be there? Yes, 360 divided by 30. So can I say in entire year, we will drive this cycle 12 times. Understand what 360? एक साइकिल को 30 days लगता है, मीन्स 30 days के बाद अगेन अनदर साइकिल. सो दूसरी साइकिल को कंप्लीट होने में 30 days और लगेंगे, मीन्स 60 days ऑफ द ईयर आर गॉन. Yes, toddler question. You feel toddler question right now, but when in exam they will ask same question, you will do some mistake. ठीक है? Hearing now it feels everything is very easy, but when we sit and write in the examination, even the toddler question becomes a scientific question at that time. Clear? So that is number. So 12 times is nothing but the number of operating cycles in a year. Following? So it is a toddler question, but when exam comes, that same toddler question gets converted into scientific question, very tough question. ऐसा होता है. So that 12 times that you calculated is nothing but number of operating cycles revolving in the entire year. ठीक है? Okay. So now how to calculate duration of operating cycle? So let's take an example and understand. एक साइकिल को 30 लग रहा है. This is a very random example that I give right now. But how to calculate this 30 days? That now we have to learn. Duration of operating cycle. ठीक है? So let's understand through a very small story. So let's say today is day 0. ठीक है? आज 0 दिन है. I go to the supplier shop and I buy raw materials on cash basis. मतलब मैं उसको पैसे आज ही दे रहा हूं एंड आज ही वो रॉ मटेरियल मुझे दे रहा है. ठीक है? सो कैन आई से टुडे द कैश इज गॉन फ्रॉम द पॉकेट, आउटफ्लो हो गया. एंड कैन आई से नाउ द कैश इज इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल. करेक्ट? Cash has taken the root, the form of raw material. It is disguised in the form of raw material. So visualize. रॉ मटेरियल खरीदते 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 मैं फैक्ट्री में आ रहा हूं. विल आई इमीडिएटली थ्रो दिस रॉ मटेरियल इनटू द प्रोसेस और आई विल स्टोर इट फॉर सम टाइम? स्टोर इट, राइट? सो कैन आई से, लेट्स से आई स्टोर दिस रॉ मटेरियल फॉर 15 days. तो कैन यू टेल मी क्या 15 days में ये पैसा वापस आ जाएगा? और 15 days
this cash is in the form of raw material. So in near 15 days मुझे दिख नहीं रहा ये कैश मुझे वापस मिलेगा. ठीक है, आज जो मैंने पैसा दिया ना रॉ मटेरियल बाय करने के लिए, दैट विल नॉट रिसीव to me within next 15 days. This is clearly that I can see clear, because now that cash is in the form of raw material. ठीक है, so raw material 15 दिन बाद I will throw it into the production. Hey, even process will take time ना, it will not just आज अभी डाला within next second it will convert into FG, right? So even WIP will take some time. So WIP process time, or you can also say WIP holding period. Let's say it takes another 10 days to get converted into FG. So can I say right from today till next 25 days, my cash is not coming back to me? Yes or no? आज जो मैंने कैश जेब से निकाला एटलीस्ट 25 दिन तक तो वो वापस नहीं आ रहा है. बोलो यस और यस. यस. ओके. So FG now processing is done. FG is ready. Again, I'm repeating, will the customer stand outside the gate of factory? Hey, FG ready हो गया, so sell करो. No. So even FG needs to be stored in the warehouse till the time sales happen. So let's say FG holding period is 15 days. Oh, right from day 0. For first 15 days, it was in the form of raw material. Another 10 days, it was into process. And now another 15 days, it is in the form of FG. Still, I have not received the cash back. So 40 days, I can clearly see right from today till next 40 days, I am not receiving any cash. Okay? Are you understanding? Okay, now FG will get converted into sales and sales to debtors. So as a normal industry practice, even debtors will ask for credit period. They will not pay on the spot. Are you following, everyone? So can I say, let's say debtors ask for 30 days credit, right from day 0. That is right from today. Today I paid the cash to buy raw material. Till next 70 days, I will not receive the cash. Yes or no? After 70 days, I am receiving the cash back from debtors. Yes or no? So पहले 15 दिन cash was in the room, in the disguised form. It had taken the form of raw material. Then for once the form of raw material was done, it took the form of WIP for another 10 days. Then for another 15 days, it was in the form of FG. FG का रूप धारण किया था. Then for next 30 days, sales तो हो गया था, but debtors was not giving me cash. Are you following? They are saying, wait, 30 दिन बाद पैसा मिलेगा. So can I say after 70 days, the cash that I paid today is receiving back to me? So that 70 days is my duration of operating cycle. आज, today, the cash that went out from my pocket is getting received back after 70 days. Is example clear to you all? Okay, now a small twist. ठीक है, now a small twist. यहाँ तक तो आपको समझ गया very clearly. ये जैसे I give 30 days का credit to my debtors. Even I am someone's customer. So even as an industry practice, I should receive credit from my suppliers. Yes or no? Are you following? So let's say I go to the shop of supplier today. I ask him, I want to buy so much quantity of raw material. He says, okay, buy it. And he says, you will get 20 days credit. Hey, so can I say my cash payment will not start from the day I purchase the raw material? Are you following? My cash outflow ideally will start after 20 days. बिकॉज कैश से जेब तो 20 दिन बाद गया होगा. हाँ, रॉ मटेरियल आज आ गया. करेक्ट. रॉ मटेरियल आई रिसीव टुडे. सो माय रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम टुडे, बट द कैश पेमेंट विल हैपन आफ्टर 20 days. Yes or no? Because he has given me 20 days of credit and can I say operating cycle starts from the day when you have paid the cash.
So can I say in other words, now my operating cycle is not 70 days. इसमें से 20 दिन कम हो जाएगा because right from the raw material holding period from day one, not paid the cash on day one. I've paid after 20 days. So can I say 20 days operating cycle को कम करना पड़ेगा? Are you following? So this 70 days is called as gross duration. उसमें से if we subtract creditors average payment period, we get 50 days, which is called as net duration. So can I say ideally day one से raw material लेके आया, but day one से I have not paid the cash. Cash outflow has happened after 20th day. Are you following? So my amount blocked, my cash blocked is ideally only for 50 days. Are you following? So my net duration of operating cycle is 50 days only. Clear? Because I am paying the cash after 20th day. Raw material, see, it is something like this. Raw material today. I brought the raw material today. So ideally, as per the formula above, ऑपरेटिंग साइकिल स्टार्ट्स. ठीक है, स्टार्ट हो गया, रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड से स्टार्ट हो गया. क्लियर? बट रॉ मटेरियल दिस इज 70th डे. क्लियर? This is the day on which I receive cash from my customers. They are paying me the cash. This is raw material purchase date. ठीक है, day one. So day one से day 70 gross duration. But can I say my amount, my cash is not going out on this day. I'm paying to the supplier on 20th day. So can I say it is a process of converting cash back into cash? तो जेब से कैश तो 20वें दिन पे जा रहा है. So from 20 days to 70 days, can I say 50 days का साइकिल हुआ? Yes or no? कैश आउटफ्लो 20th डे पे हुआ, कैश रिसीव हुआ 70th डे पे. सो अमाउंट ब्लॉक्ड वाज आइडियली फॉर 50 डेज ओनली. हाँ, यहाँ तो सिर्फ रॉ मटेरियल, पहले 20 दिन तो सिर्फ रॉ मटेरियल वाज परचेज्ड एंड केप्ट इन द गोडाउन. Clear, everyone? So in short, I explained you the formula of duration of operating cycle. It is nothing but gross duration less creditors average payment period, and we get net duration of operating cycle. So one cycle 50 days. पूरे साल में कितनी साइकिल होगी? अब ज्यादा साइकिल घूमेगी. तो 360 डिवाइड बाय 50 करो तो कितना आया? So now there will be more cycles, and that is a good sign because your funds are releasing early. Your amount is blocked for less period of time. अब 50 दिन के लिए आपका कैश ब्लॉक है 7.2. अच्छा, आगे, हाँ, पहले 70 डेज था. ठीक है. सो अर्लियर इट वाज 70 डेज, नाउ इट इज फॉर 50 डेज. पहले 30 दिन था और भी कम था इस एग्जांपल में तो. सो देयर इट वाज 12 टाइम्स. See, can I say, so number of operating cycles are higher. That is a good sign for the business. Amount is getting blocked for lesser period of time. Cash is getting blocked for less period of time. His payment is made from the before the credit period, then from the day when you pay the cash. That is the whole point. Cash outflow कौन से दिन पे जा रहा है? That is the whole point. From that period your cycle starts. Clear? So today's session we completed estimation of working capital. We also completed the concept of working capital operating cycle and its duration. ठीक है? So I hope today's session also added some value in your academics and you understood all the concepts. Yes, margin of safety. See, ultimately the objective is the amount that you get is the estimate. So to be on conservative side, you have to add safety margin. ठीक है? So जो भी estimation बैंक को आप present करोगे, bank will also say, okay, this is estimated amount. Do you want to be conservative on this? Do you want some higher amount? So that you add safety margin as well. Clear? Okay, tech team, let's end today's session. It's already 4 minutes above the time. Thank you all. Thank you. Recording stopped.